Krishna, that was for you. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते हैं और कहें कृष्णा ये मैंने आपके लिए It's किया। first, we're the servant, what does Krishna want us to do? पहले हम दास हैं और कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं? If there's unlimited services, अगर अनंत बहुत सारी सेवाएं हैं, so which one does Krishna want us to do? तो इनमें से कौन सी सेवा कृष्णा हमसे So चाहते that हैं? requires, like Arjuna asking Krishna, please tell me decisively, specifically, what should I do? जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मुझे विशेष रूप से निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करने What की is my जरूरत है? service? How can I please you? क्या मेरी सेवा है? कैसे मैं आपको खुश How कर can सकता I हूँ? serve you properly? कैसे मैं आपको सही तरीके से सेवा And कर of सकता course, हूँ? Krishna is helping inside and he's helping out through the spiritual master. और कृष्णा भीतर से और बाहर से आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से मदद कर रहे हैं। When I met my spiritual master, I understood he's pure via medium of Krishna, तो जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला, मैं समझ पाया कृष्णा के शुद्ध by the माध्यम से, mercy of Krishna कृष्णा की कृपा से and the mercy of Sadhu Guru Vaishnava और साधु गुरु वैष्णव and की कृपा Srila से Prabhupada's mercy. और श्रील प्रभुपाद की कृपा I से came to that conclusion, absolutely. मैं उस परम निष्कर्ष पे पहुंच पाया। Then I understood this is pure via medium of Krishna. तब मैं समझ पाया ये कृष्ण के शुद्ध माध्यम है। So then I went to Gurudev and I said, Gurudev, please tell me what Krishna wants me to do. और तब मैं गुरुदेव के पास गया और मैंने कहा, मुझे बताइए कि कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं? Because then when he says, that means that's what Krishna wants you to do. क्योंकि जब वो बताएंगे तो इसका मतलब कृष्ण आपसे वही चाहते हैं। So then Gurudev said, come to तो Bhubaneswar. गुरुदेव ने कहा भुवनेश्वर आ जाओ। Okay? So I just was like a heat-seeking missile. तो मैं जो है Get to Bhubaneswar somehow or other. तो जैसे मैं मिसाइल की तरफ आगे बढ़ गया कि मुझे भुवनेश्वर किसी भी तरह जाना है। I don't know how I'm going to do it. पता नहीं मैं कैसे ये करूँगा। I have no money. मेरे पास कोई पैसा नहीं है। Everything complicated. सब कुछ बहुत जटिल है। मैं विदेश मुझे जाना I है। don't even know what is Bhubaneswar. मुझे पता ही नहीं भुवनेश्वर है क्या। But I'm going to Bhubaneswar. लेकिन मैं भुवनेश्वर जाऊँगा। And I just made like a, one-pointed attention how to get there. और मैंने अपना पूरा ध्यान उसी एक जगह पे लगा दिया मुझे वहाँ। Because that's what Krishna wanted me to do. क्योंकि कृष्णा मुझसे वो चाहते हैं। And I had faith that he was manifesting and speaking through my spiritual master, Srila Govinda Swami. और मुझे ये श्रद्धा थी कि कृष्णा मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। Otherwise, how do we know what Krishna wants us to do? वरना हमें कैसे समझ में आएगा कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं? I told you the stories when I tried to do some seva and Gurudev was not happy with me because he never asked me to do those things. और कई बार मैंने आपको बताया मैं बहुत सारे अलग अलग सेवा करने का प्रयास कर रहा था जो गुरुदेव मुझसे नहीं चाहते थे और गुरुदेव उन सेवा से मुझसे खुश नहीं थे। And I kept trying to do more and Gurudev was not happy. और मैं और ज़्यादा करने का प्रयास करने लगा और गुरुदेव मुझसे खुश नहीं थे। Because what he wanted me to do, Krishna already spoke through him just here, Srimad Bhagavatam. क्योंकि कृष्णा जो मुझसे चाहते हैं उन्होंने उनके माध्यम से मुझे बता दिया था कि Just here, Hari-katha करो Krishna-katha. केवल हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करो। And even I would say, is there any other thing besides that? No, just come and hear Hari-katha Krishna-katha. First important, most important service. और मैंने उनको पूछा कि क्या इसके अलावा मैं और भी कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, बस आओ हरि कथा कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम श्रवण करो, बस इतना ही। And at first I told you it seemed too simple और मुझे शुरू में लगा ये बहुत सरल है because the class is just few hours a day. क्योंकि क्लास जो है दिन में कुछ ही घंटे होते थे। But then I started to understand that what does it take to be in the best possible consciousness when you come to the class? लेकिन बाद में मुझे धीरे-धीरे ये बात समझ में आई कि क्या चीजें जरूरी है सब ताकि आप अपनी चेतना को ऐसी स्थिति में रख सके कि आप क्लास में जाके सुन You don't सकें। just show up at the class and okay, I'm going to hear. ऐसा नहीं कि आप क्लास में घुस जाएंगे और कहेंगे आज मैं सुनने वाला If हूँ। everything we're doing is completely disturbing and distracting and contaminating the rest of the day, अगर दिन के बाकी समय हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें खुद परेशान हो रहे हैं, पूरे अपने आप को दूषित कर रहे हैं, भटके हुए हैं। so then I understood, oh, this means I have to chant really nice rounds. और तब मैं मुझे समझ आया कि इसका मतलब मुझे बहुत I ही have to गंभीर get up तरीके से early, करने की take a जरूरत है। bath, get dressed, chant really nice rounds, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके अच्छे से नाम बहुत अच्छे तरीके से get अपना in the जप right करना चाहिए consciousness, और अपनी चेतना को सही स्तर में लाने try की not जरूरत to है। offend anybody on the way to the temple room. और मंदिर जाते समय रास्ते में किसी को It's कुछ like a अपराध नहीं full-time करना, job. मतलब हमेशा नित्य करना It's just चाहिए। like a doctor when he's going for surgery, right? तो जैसे डॉक्टर जो है सर्जरी पे जाने He's से like पहले washing his hands and they're like doing everything not to get contaminated before they go for the surgery, right? अपने हाथ अच्छे तरीके से धोए, मतलब हर वो चीज इस तरीके से करें कि किसी भी तरह का कलमश उनके अंदर न रहे They सर्जरी get all करने the से पहले। protective gear on, the gloves, right? They're just walking around like
let me not pick up any contamination here, right? उस तरह के विशेष कपड़े पहनते हैं, अपने ग्लव्स लगाते हैं और अपने आप को ऐसे सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं किसी तरह का गंदगी या कलमश उनके अंदर ना आ पाए। And you go for the surgery. और उसके बाद वो सर्जरी करने जाते And even the patient, right? You यहाँ need तक कि to take a shower and put on, special anti-bacterial soap, right? कि मरीज को भी अच्छे से स्नान करके एंटी बैक्टीरिया सोप साबुन You लगाया have to put जाता on है proper clean clothes, और अच्छे उसको साफ कपड़े पहनाए जाते हैं। right? And the whole bed, everything has to be brand new sheets, clean, everything paka, right? और जो बिस्तर है उसको भी अच्छे तरीके साफ सुथरे तरीके से नए जो उस पे कवर लगा के रखा They जाता है। sometimes shave your head. They try to prepare you for the surgery, right? कभी-कभी जो है सर मुंडवा दिया जाता है ताकि उनको अच्छे तरीके से सर्जरी So के लिए if the तैयार किया doctor's जाए। doing like that and the patient's doing like that, then you have the best chance of not getting any infection or contamination. तो अगर डॉक्टर इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, मरीज इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे श्रेष्ठ मौका है कि किस तरह से कोई गंदगी नहीं फैलेगी। Because the sadhu vaidya guru is like a doctor. क्योंकि साधु वैद्य वो गुरु जो है वो He's doing some very delicate cutting work. तो वो बहुत ही सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं काटने का। Right? The sadhu means to cut. साधु का मतलब है काटना। Of course, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he had a chopping technique. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है वो हलाल कर देने की तकनीक। But sometimes your chopping can be very precise also. लेकिन कभी-कभी जो है ये काटना बहुत ही बारीकी से भी किया जा सकता है। Especially if you need like some limb or something taken off, if you have some big anartha, जब विशेषकर कोई पूरा अंग ही काट देना हो या जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो। Why cut around, man? Just chop it off, get rid of it. आस-पास कटाई क्यों करेंगे? पूरा ही काट के बाहर कर दो। Right? So this is more subtle than brain surgery. तो ये ब्रेन सर्जरी से भी ज़्यादा सूक्ष्म काम है। Right? You look at the most intricate, systems within the body. तो शरीर का सबसे जटिल Electrical systems, DNA, right? The spinal surgery, right? This is the most subtle type of surgery, right? DNA, आपके कमर मेरुदंड की सर्जरी जो ये सब जब बहुत ही सूक्ष्म सर्जरी होती है। And you need a lot of education, a lot of training, a lot of expertise to do that type of surgery. और इसको करने से पहले बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा प्रशिक्षण, बहुत अच्छा अनुभव करने की जरूरत है इस तरह की सर्जरी कर पाने के लिए। And that's just the gross body. और ये तो केवल स्थूल शरीर के साथ करने के लिए। Or even if you say like a psychologist, psychiatrist, right? They're working with the intricacies of the mind, which is even more subtle. और कुछ लोग जैसे जो मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये लोग मन जो और भी ज़्यादा सूक्ष्म जटिल है उसको उसकी गहराई से उसको Different types of mental disease or trauma that people go through. बहुत तरह के मानसिक बीमारियां या किस तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं ऐसे That's an even more subtle type of treatment. ये और भी ज़्यादा सूक्ष्म स्तर का उपचार है। But at the heart of it, we have a spiritual disease. लेकिन हमारे ऊपर तो आध्यात्मिक बीमारी है। So the spiritual disease means on platform of the soul. तो आध्यात्मिक बीमारी मतलब आत्मा के स्तर पे। Of course, the soul itself is sadhu, is completely pure. How do you say? Part and parcel of Krishna. अवश्य आत्मा स्वयं में शुद्ध है, साधु है और कृष्ण का अंश है। So the soul doesn't need surgery. तो आत्मा को सर्जरी की जरूरत नहीं है। But what's covering the soul, gross and subtle covering, that has to be cut away and purified away from the soul. और आत्मा के ऊपर जो आवरण है स्थूल और सूक्ष्म इसको काट के शुद्ध करके साफ करने की जरूरत है। So bona fide sadhu guru Vaishnava, sadhu vaidya, they know how to do that type of treatment program. तो प्रमाणिक साधु गुरु वैष्णव वैद्य उनको पता है कैसे इस तरह का उपचार किया जाता है। They know how to separate, the soul and the gross and subtle material body. उनको पता है कैसे आत्मा और स्थूल और सूक्ष्म शरीर को कैसे अलग किया जा सकता है। And they know how to, purify all those things which are contaminating and affecting and disturbing, influencing the soul and consciousness. और उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे इन चीज़ों को दूर किया जा सके जो आत्मा को और ज़्यादा कलमश में डाल रहा है और ज़्यादा समस्या में डाल रहा है और भटका रहा है, परेशान कर रहा है। So without being trained under the guidance of such personality, nobody can really understand it. तो बिना ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में कोई अगर सही प्रशिक्षण प्राप्त न करे तो कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। Even in university, you have to be checked into best university. यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी आपको सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है।
और वहाँ आपको जो है स्वीकार किया जाता है You दाखिला go to लेने the के लिए। proper professors, experts in that particular field. और किसी विशेष प्रोफेसर के पास जाके उस विशेष And you क्षेत्र have के to study, you have to learn from them. और उनसे जाके अध्ययन करके उनसे सीखना होता है। And then they're referring to scientific books, authoritative best books on that topic. और उस विषय के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक किताबें हैं, वैज्ञानिक किताबें हैं, उसको वो पढ़ने की सलाह देते हैं। So they're giving some type of, theoretical understanding of it. तो वो किसी तरह का एक मौखिक समझ आपको प्रदान करते हैं। Then they have a practical application of it, how to apply it. और फिर उसको व्यवहारिक कैसे जीवन में लगाना है, कैसे तरीके से उसको। Sometimes they're even working on dead bodies or other types of the species just to get some kind of expertise. तो कभी-कभी मुर्दे के ऊपर या फिर किसी अन्य जीव प्रजाति के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके देखने का, शोध करने का प्रयास करते हैं। So this is not no ordinary person can just do that work. तो कोई भी सामान्य व्यक्ति जाके ऐसा काम नहीं कर सकता। They must be qualified by the mercy of Guru and Krishna. तो अवश्य उन्हें योग्यवान होना होगा गुरु और कृष्ण की कृपा से। They must be accepted by those bona fide qualified representatives. और उन्हें अवश्य स्वीकार किया हुआ होना चाहिए ऐसे प्रमाणिक व्यक्तियों के माध्यम से। And they must be trained there. और अवश्य उन्हें वहाँ प्रशिक्षण लिया हुआ होना चाहिए। The problem, that's a question of authorization. तो यहाँ प्रश्न है किसको अधिकार। So one who's been properly trained and qualified, those teachers or preachers, they're the ones to say whether you're qualified, whether you've passed that exam, whether you should be authorized to perform that function. तो जो आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो आपको योग्य बना रहे हैं, वही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं ये बात बताने के लिए, आपको अधिकार देने के लिए आपने सही प्रशिक्षण या योग्यता प्राप्त की है या नहीं। So it says that one should be ordered and authorized by previous acharya. इसलिए कहा जाता है किसी को आदेश और अधिकार प्राप्त हुआ होना चाहिए In पूर्व order आचार्य to से, assume that role and that responsibility. ताकि उस भूमिका को, जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो लायक हो सके। Now, everybody wants to be a guru. अब सभी गुरु बनना चाहते हैं। Right? Everyone wants to be God. What's so difficult to think everybody wants to be the guru? Everyone has some knowledge. Everybody wants to be heard. Everybody wants to be teacher, guru. तो सभी जब भगवान बनना चाहते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि सभी गुरु भी बनना चाहते हैं। सबके पास कुछ ज्ञान है, सब अपना ज्ञान लोगों को बांटना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। But Prabhupada said you cannot be self-made guru. प्रभुपाद कहते हैं आप खुद से बने बनाए गुरु नहीं बन सकते हैं। Having a theoretical understanding or academic understanding is also not sufficient. ये किताबी ज्ञान या शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है इसको कर पाने It का। must be practically realized. इसका व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। So only the previous acharya in Krishna Parampara are they qualified to say who realizes this information. तो केवल कृष्णा परंपरा में जो प्रामाणिक आचार्य हैं केवल वही बता सकते हैं किसने इस प्रक्रिया में अपने आप को योग्य बनाया है। Everyone can think they're realizing it. सभी लोग ये सोच सकते हैं कि हम ये The साक्षात्कार most किया है, qualified person is the one who has the final say. लेकिन जो सबसे ज्यादा योग्यवान व्यक्ति हैं अंत में वो कहेंगे किसी ने साक्षात्कार किया Therefore, है। if he's sufficiently satisfied and has confidence and faith that you've understood properly and you can execute it as it is, then they may authorize you to do the same. तो अगर जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं जो आपको ये योग्य बना रहे हैं वो अंतिम ये बात कहेंगे, आपको ये आदेश अधिकार दे पाएंगे कि आप करने के लिए योग्य हैं या नहीं। So, even some of my godbrothers, they want to be guru. यहाँ तक कि मेरे कुछ गुरु भाई वो गुरु बनना चाहते हैं। And even Prabhupada said, we want everyone to be guru. और प्रभुपाद ने ये भी कहा, वो कहते हैं प्रभुपाद ने कहा हम सब चाहते हैं सभी गुरु But बने, become qualified लेकिन पहले योग्य बनिए and become authorized और अधिकार प्राप्त कीजिए and become empowered, और सशक्तिकरण प्राप्त कीजिए, then you can do it. तब आप ये कर सकते हैं। But we have our godbrothers, some of them, they want to be guru without understanding these principles. और मेरे कुछ गुरु भाई हैं जो गुरु बनना चाहते हैं बिना इस सिद्धांत को समझे। They say, oh, well, people, they want me to be the guru. वो कहते हैं कि लोग चाहते हैं मैं गुरु बनूं। And some GBC members are saying, yeah, you should also be guru. और कुछ जीबीसी के सदस्य भी करें हाँ आपको भी गुरु बनना चाहिए। So, and there's so much need for the guru. और गुरु की जरूरत भी है बहुत। Right? And if people are suffering for want of gurus. और लोग बहुत दुख में हैं इस गुरु के अभाव के Okay, कारण। all of that is true. ठीक है, सब बहुत सही बात है।
But that is not how you become authorized. लेकिन इस तरीके से आपको अधिकार नहीं मिलता। You must receive order. Prabhupada says you must receive order and instruction from previous acharya in parampara. प्रभुपाद बताते हैं आपको अवश्य आदेश अधिकार प्राप्त करना होगा पूर्व आचार्य से जो परंपरा है। A self-made guru cannot be a guru. स्वयं निर्मित कोई गुरु नहीं बन सकता। And when I asked them, did Gurudev order and instruct you to do that seva? और मैंने उनको पूछा क्या गुरुदेव ने आपको आदेश दिया है, निर्देश दिया है गुरु ये They सेवा become करने के लिए? furious. तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा हो Furious जाते with हैं, me, मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, which is an interesting reaction. जो कि बहुत दिलचस्प प्रतिक्रिया है। Because if someone said, well, did Gurudev order and authorize you to take this responsibility? I would say yes. अगर कोई मुझसे पूछे क्या गुरुदेव ने आपको आदेश दिया, अधिकार दिया ये सेवा करने On के लिए? numerous occasions, Gurudev gave me this instruction. कई बार मुझे गुरुदेव ने ये निर्देश दिया है करने के लिए। Gurudev said, just like Srila Prabhupada ordered and instructed me to do like this, I'm ordering and instructing you to do like this, Murali. मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जिस तरह से श्रील प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया ये करने के लिए, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ ये करने के लिए मुरली। And Gurudev said this on numerous occasions in front of my godbrothers. और गुरुदेव ने एक कई बार मेरे गुरु भाइयों के सामने ये बात कही है। Thank God, धन्यवाद। because nobody will listen to you otherwise. वरना कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। Of course, they want to say, well, he didn't really mean this and that, but that's another topic. और अवश्य बात में ये कहेंगे हाँ असल में उनका ऐसा मतलब नहीं था, ये नहीं था, लेकिन ये और अलग एक विषय है। But you will not be defensive and angry. You say, no, yes, Gurudev ordered, instructed me to take some responsibility. लेकिन आप अपने आप को बचाने का प्रयास और गुस्सा होने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ आप कहेंगे कि गुरुदेव ने मुझे ये जिम्मेदारी लेने को कहा था। And so anyway, I have to try my best to do that. और मुझे किसी भी तरह से अपना श्रेष्ठ प्रयास करना होगा ये करने के लिए। Srila Govinda Maharaj told me sannyas is meant for you. श्रील गोविंद महाराज ने मुझे कहा कि संन्यास तुम्हारे लिए। That's when I was a newly married person with a brand new child. और उस समय बिल्कुल ही नया नवविवाहित व्यक्ति छोटे बच्चे के साथ में था। And when Gurudev found out I was married, he said, you made a great blunder. और जब गुरुदेव को पता चला कि मैं विवाहित हूँ, गुरुदेव ने कहा तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। Because I wasn't meant to get married. क्योंकि मैं विवाह करने के लिए मुझे। But I went to the previous guru. They said, no, definitely you should get married. लेकिन मेरे पूर्व गुरु के पास मैं गया तो उन्होंने कहा निश्चित ही आपको विवाह करना चाहिए। Exactly opposite instruction. बिल्कुल ही उल्टा निर्देश उन्होंने मुझे विपरीत निर्देश दिया था। Then Gurudev told me just before he left his body. तो गुरुदेव ने अपना ये शरीर त्याग करने से कुछ समय पहले ही मुझे कहा that I want you to help me to manage all of my projects. कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो मेरे सारे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए। So these are direct instructions I received from my spiritual master, who is pure Vayu medium of Krishna. तो ये वो सीधे सीधे निर्देश जो मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किए जो कृष्ण के शुद्ध माध्यम है। And Gurudev said you expressed this philosophy boldly and fearlessly. और मेरे गुरुदेव ने कहा आप ये सिद्धांत लोगों के सामने प्रचार कीजिए पूरी हिम्मत से और बिना डरे। And don't make any compromise. और कोई भी समझौता मत करना। Because you have to try to help the people by establishing the truth. क्योंकि आपको लोगों की मदद करनी है इस सत्य को स्थापित करने। So that's going to make you a lot of enemies. तो ऐसा करने में आपके बहुत सारे शत्रु बनेंगे। Many times, Srila Govinda Swami, towards the end when he's speaking in the Mayapur, no sannyasi, no gurus, no GBC even came to his classes. तो जब श्री गोविंद महाराज अपने अंतिम समय में मायापुर में जब क्लासेस दे रहे होते थे, कोई भी सन्यासी, कोई भी गुरु, कोई भी जीबीसी के सदस्य, बड़े जो व्यक्ति कोई भी क्लासेस में नहीं आते। प्रेमी भक्त महाभागवता, नित्य सिद्ध, प्रेमी भक्त महाभागवत, नित्य सिद्ध, राधा प्रिय सखी, राधा प्रिय सखी, direct representative of Mahaprabhu's parampara after Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की इस कृष्ण परंपरा के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद के बाद। And you're boycotting such personality. और ऐसे व्यक्ति को नकारा जा रहा है। And you want to try to throw them out of the institution. और उनको संस्था से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। You want to excommunicate such personality. ऐसे व्यक्ति को बहिष्कार करने का प्रयास किया जा रहा है। This is the unfortunate, unpalatable history. ये है बहुत ही दुर्भाग्य इतिहास। So Gurudev used to quote
Bhaktivinoda Thakur, they said when you try to speak unpalatable truth with no compromise, तो गुरुदेव श्री भक्ति विनोद ठाकुर की बात बताते हैं कि अगर आप सत्य को स्थापित करने का प्रयास करें बिना किसी समझौते all के, agents of untruth, even they hate each other, still they'll come together to try to oppose you. तो ये सारे असत्य हो सकता है आपस में एक दूसरे से वो नफरत करते हो, लेकिन आपको दबाने के लिए वो आएंगे। This is natural. ये है बहुत स्वाभाविक When बात। you try to establish the truth, Guru Sadhana Shastra, in the land of untruth, जब आप गुरु साधु शास्त्र और सत्य को स्थापित करने का प्रयास And the करें Maya सत्य के Jagat. जगत में, माया जगत में, everything here is faulty and untrue. यहाँ सब कुछ दोषों से भरा है और असत्य है। If you try to establish the truth, then that is the deviation. अगर आप यहाँ सत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आप विमुक्ता यहाँ लाने का प्रयास That कर is रहे the threat. हैं। ये यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा If है। there's nobody establishing that truth, then anybody can say anything, अगर कोई भी सत्य को स्थापित नहीं कर रहा है तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, and you can present anything. आप कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। And foolish, uneducated people, they'll not understand और मूर्ख अनपढ़ लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, because the deviations are so subtle क्योंकि ये विमुक्ताएं इतने सूक्ष्म हैं that you'll not be able to perceive those subtle deviations. क्योंकि आप ये सूक्ष्म विमुक्ताओं को महसूस नहीं कर पाएंगे। So as soon as you start to make this this type of, how do you say, dissection between what is real and unreal, true and untrue, you'll be a great threat to those people. तो जैसे ही आप ये सीधा सीधा भेद दिखाने लगेंगे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सच है, क्या असली है, क्या नकली है, तो आप बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। You see what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, right? He tried to, this whole Brahminical caste system of so-called, how do you say, spiritual leadership, completely dismantling this thing as a complete scam. तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये जो नाम मात्र के ब्राह्मणवाद की जाति प्रथा जो है, जो अपने आप को आध्यात्मिक नेता बताते हैं, आध्यात्मिक And समाज preaching का, to the Babajis sitting over in Radhakund और ये जो बाबा जी जो राधाकुंड में बैठ के and just chastising them at Radhakund in front of all the pilgrims. These people are the biggest rascals sitting here. वो जाके राधा कुंड में ही उन्हीं लोगों को, सभी लोगों के सामने जो कह रहे ये सबसे बड़े ठग हैं। So when you try to speak that truth, not everybody, most people, they don't want to hear that. जब आप सत्य बोलेंगे ज़्यादातर लोग उसको सुनना नहीं चाहते, It's inconvenient for them. ये उनको असुविधाजनक लगता है। Even they're changing the books यहाँ तक कि वो किताबों को भी बदल रहे हैं, because certain words and phrases are too much exposing them. क्योंकि कुछ शब्द या वाक्य कुछ ज़्यादा ही उनको उनके सत्य को बाहर भी निकाल रहे हैं। So I told to my god brothers, god sisters, you know, you're trying to understand me. तो मैंने अपने गुरु भाइयों और बहनों को कहा कि आप And मुझे समझने you're का trying प्रयास करें, to weigh and measure me and judge me. मुझे मापने का, मुझे आंकने का प्रयास कर रहे हैं, But our spiritual master has already done that. लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु ने पहले ही ये कर लिया है। And he's the most qualified person to be able to make that analysis और वो सबसे योग्यवान व्यक्ति है इस आकलन को करने के लिए and that judgment. और इस निर्णय को करने के लिए। Where they said bona fide guru, he knows in whose ear this Hari-katha Krishna-katha is entering. गुरुदेव बताते थे कि प्रमाणिक गुरु को पता है कि किनके कानों में ये हरि कथा कृष्ण कथा प्रवेश कर रही है। He knows who's hearing it and he knows who's realizing it. उनको पता है कौन इसको सुन रहा है, कौन इसका साक्षात्कार कर रहा है। And he also knows who will be able to present it as it is. और उनको ये भी पता है कौन इसको यथारूप में प्रस्तुत भी कर पाएगा। He's trying so hard. He's being so sincere. It's very nice. ये बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत एकनिष्ठता से प्रयास कर रहे हैं। Imagine if I told him I want hot milk right now. कल्पना कीजिए मैं आपको कहूँ कि मुझे गर्म दूध चाहिए, He would lose his mind. उनका दिमाग ही खराब हो जाएगा। So water's nice. पानी अच्छा है। I'm even going to try it. और यहाँ तक कि मैं प्रयास भी करूँगा। So this is very important. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So without Krishna's mercy, thank you. Without Krishna's mercy, without Guru's mercy, no one can see and understand properly. तो बिना गुरु और कृष्ण की कृपा के ना तो कोई कुछ अच्छे से देख सकता है ना समझ सकता है। Everything is defective. सभी कुछ दोषों से भरा है। Without special mercy of Krishna and Guru, Sadhu, it's all
blindness, it's all defectiveness. बिना इस विशेष कृपा के साधु गुरु वैष्णव के यह सब कुछ दोषों से भरा है, सब कुछ गलत है। And we don't realize that. और हम इसको अनुभव भी नहीं करते। That's why with our pride and our senses, we're thinking we can understand everything, we can measure everything, we can realize everything. अपने दम्भ में, अपने इस इंद्रिय के दोषपूर्ण होने के बावजूद भी हम सोचते हैं हम सब कुछ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं। But if we take to a faulty process, we're going to come to a faulty conclusion. लेकिन आप गलत प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो गलत निष्कर्ष पे ही पहुंचेंगे। That's for sure. ये निश्चित है। Any questions so far? कोई प्रश्न अभी तक किसी का? Yeah. You see David Davis so happy today? आप देखिए आज देवदेव कितने खुश हैं। Doesn't he look happy? क्या आपको खुश नहीं लग रहे हो? That's a good sign. ये बहुत अच्छा संकेत है। I hope I don't do anything to disturb that. मुझे उम्मीद है मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे ये परेशान हो जाए। I'm going to be careful. मुझे सावधान रहना होगा। Okay, Hare Krishna. You just talk about this, but I want to ask you more about how to exactly can recognize your guru. Okay. How to recognize my guru? No, not your, like your for everyone. Or anybody's guru? Yeah, how one person can recognize his guru. That's a very nice question. प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे कोई अपने गुरु को पहचान सकता है। गुरुदेव बता रहे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका बहुत धन्यवाद। So how can a deaf, dumb and blind person, how can they recognize? तो कैसे कोई अंधा, गूंगा, बहरा व्यक्ति पहचान सकता है कुछ भी? How's it possible? ये कैसे संभव है? If you're deaf, dumb and blind, अगर आप अंधे, गूंगे, बहरे how हैं, can you recognize anything? आप कैसे कुछ भी पहचान सकते हैं? Some aspect of your deaf, dumb and blindness has to be lifted, right? यानी कि आपका अंधा, गूंगा, बहरापन, इसका कुछ भाग सब ठीक करना होगा। So if we get mercy of Krishna, mercy of Sadhu Guru Vaishnava, they'll purify this different type of covering or contamination, deaf, dumb and blindness. अगर आपको साधु गुरु वैष्णव की कृपा मिलेगी तो ये जो अंधा, गूंगा, बहरापन का कुछ भाग वो हटा देंगे। They'll qualify us to be able to understand. वो आपको योग्य बनाएंगे कि आप समझ पाएंगे। So we are not the seers. तो हम दृष्टा नहीं हैं, We are to be seen. हम दृश्य हैं। So it really boils down to how sincere and serious are we to want to surrender to Krishna. तो अंतिम बात यही सामने आती है कि हम कितने गंभीर एकनिष्ठ हैं कृष्ण को शरणागत सेवा करने के लिए। And Krishna is the witness and the judge of that. और कृष्ण उसके साक्षी हैं, वो ही उसका निर्णय भी करेंगे। When people were asking Prabhupada about how it seems so complicated to understand who is the guru. जब किसी ने प्रभुपाद को सवाल पूछा कि समझने में बहुत कठिन लग रहा है कि गुरु कौन है? That's not the problem. प्रभुपाद कहते हैं ये कोई समस्या The नहीं। problem is how sincere and serious are you to want to fully surrender to Krishna. समस्या ये है आप कितने गंभीर एकनिष्ठ हैं कृष्ण को पूर्ण शरणागत करने के So लिए। that's what we first have to try to understand. तो ये सबसे प्रथम चीज हमें समझने का प्रयास करना होगा। Krishna says, if you sincerely, seriously want to surrender to me and render pure devotional service to me, I will give you intelligence how to do it. तो कृष्ण बताते हैं अगर आप बहुत गंभीर एकनिष्ठ हैं मुझे शरणागत करने के लिए, मेरी शुद्ध भक्ति करने के लिए, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप मुझ तक आ सकते हैं। And Krishna says, I'll show you special mercy. I'll destroy all the ignorance, all the darkness, all the deaf, dumb, and blindness in you, so that you'll be able to be enlightened to understand spiritual topic. और कृष्ण बताते हैं मैं ये अज्ञान, ये अंधकार, ये अंधा, गूंगा, बहरापन मैं साफ कर दूंगा ताकि आप सही तरीके से देख पाएंगे। So mercy of Krishna and mercy of Sadhu Guru Vaishnava, that is most required. तो कृष्ण की कृपा और साधु गुरु वैष्णव की कृपा सबसे ज्यादा जरूरी And है। how we'll get that mercy if we are not sincere and serious to want to fully surrender to Krishna. और कैसे हमें ये कृपा मिलेगी अगर हम इतने गंभीर एकनिष्ठ नहीं है कृष्ण को पूर्ण शरणागत करने के लिए? It's not possible. ये संभव नहीं है। And then if we remain in this deaf, dumb and blind consciousness, और अगर हम ऐसे अंधे, गूंगा, बहरेपन वाली चेतना में बने हुए हैं, we don't even know what's happening materially. हमें भौतिक जगत में भी क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। What to speak about the spiritual. तो आध्यात्मिक तरीके से जगत में क्या हो रहा है हमें क्या So समझ नहीं आ रहा है। then my Gurudev used to say, with what measuring instrument will you measure the Guru? तो मेरे गुरुदेव बताते हैं कौन से मापने के उपकरणों से आप गुरु को मापने वाले हैं।
Do you have that stone? Do you have that way to measure and understand that Guru? आपके पास कोई वो पत्थर है जिससे आप उनका वजन निकालेंगे, आप उसको माप पाएंगे गुरु को? And Gurudev used to say the three most important things you need to know about that Guru. और गुरुदेव बताते हैं तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको गुरु के बारे में जानने की जरूरत है. You have no ability to see or understand. आपके पास कोई क्षमता नहीं है उसको देख पाने के लिए और समझ पाने के लिए. Right? What do you need to know? How much faith does this person have in Krishna? पहली चीज आपको देखने की जरूरत है कितनी ज्यादा श्रद्धा है इस व्यक्ति को कृष्णा में. How will you measure that? कैसे आप इसको मापेंगे? With what senses do you have that you'll measure how much faith that Guru has in Krishna? आपके पास कौन सी ऐसी इंद्रिय जिसका आप इस्तेमाल करके समझ पाएंगे गुरु के पास कितनी श्रद्धा है कृष्णा के ऊपर? How surrendered is he to Krishna? What is he willing to do for Krishna? कितने ज्यादा वो कृष्णा को शरणागत है, कृष्णा को के लिए वो क्या करने के लिए तैयार है? So how will you measure that person's willingness to surrender to Krishna? तो कैसे आप उस व्यक्ति की इच्छा को कृष्णा को शरणागत करने के प्रति इसको कितना है माप पाएंगे? Not just externally, but I'm talking internally. केवल बाहरी से नहीं, मैं भीतर की बात कर रहा हूँ. Right? And then what is this person's motivation? और उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? So how will you measure, with what will you measure the motivation of the Guru? तो कौन सी चीज से आप गुरु के उद्देश्य को माप पाएंगे? So the three most important things you need to know, you have no ability to know. तो तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको जानने की जरूरत है, आपके पास कोई क्षमता नहीं उसको जानने के How लिए. much faith they have, how surrendered to Krishna are they, and what is their true motivation? How will you measure that? कितनी उनकी श्रद्धा है, कितना उन्होंने शरणागत किया है, क्या उनका उद्देश्य है, कैसे आप इन सारी चीजों को मापेंगे? So therefore merciful intelligence, purified mind and senses from Krishna is first of all most required. तो इसीलिए कृष्ण की कृपा के माध्यम से शुद्ध मन, बुद्धि, इंद्रिय सबसे पहली जरूरत है. And unless one convinces Krishna that they want to fully surrender to Krishna, जब तक कोई कृष्ण को आश्वस्त करता है कि वो कृष्ण को पूर्ण शरणागत करना चाहता है, they will not get the necessary purification of consciousness and intelligence to be able to understand. तो उनको पर्याप्त शुद्धिकरण या स्थिर चेतना नहीं मिल पाएगी कि वो इस जरूरी चीज को समझ पाएंगे. So if you say, okay, do you want to fully surrender to Krishna? And most people say, oh yeah, I mean, I'd love to, but really I'm not ready for that. अब जब लोगों से पूछेंगे कि आप कृष्ण को पूर्ण शरणागत करने के लिए तैयार कहते हैं, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैं असल में पूरा करने के लिए तैयार नहीं. I'm not really that serious for that. मैं ये करने के लिए इतना गंभीर नहीं. Then what is your talking about Guru Tattva? तो आप गुरु तत्व की क्यों बात कर रहे हैं? What is your analysis and discussion about the topic? तो इस विषय के ऊपर आपका क्या आकलन है या क्या विचार है? So we're not doing what's required to get the intelligence and faith to be able to even understand what to speak of, being conversant or discussing that tattva. हम उतने गंभीर एकनिष्ठ नहीं है इस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तो इसके बारे में पूरे तरीके से निपुण होने का क्या कहना है? That means off. इसका मतलब है बंद करना है दरवाजे को. Because it's going like halfway. If it goes like really fast, or it can be shut off, right? तो ये बहुत तेज घूम रहा है, इसमें दो ही चीज किया जा सकता है, या पूरा इसको बंद किया जा सकता है या पूरा चालू किया जा सकता है. What will it be? तो क्या होगा? On or off? ऑन होगा या ऑफ किया जाएगा? So you understand? आप समझ पाए? Yes. So the only one who can really measure that is previous acharya, तो एक ही मात्र व्यक्ति जो इसको माप सकते हैं वो है पूर्व आचार्य, because he knows by his own qualification, his own realization, क्योंकि वो खुद के साक्षात्कार से ये जान पाते हैं what is one's faith, surrender, and motivation किसकी कितनी श्रद्धा, शरणागति और उद्देश्य क्या है of his disciple. उनके शिष्य की. So Prabhupada said the easiest way to know who is the next guru or acharya is to find out who the previous acharya ordered and authorized or instructed to take that responsibility. प्रभुपाद ने बताया सबसे आसान तरीका ये पता लगाने का कि कौन ही अगला आचार्य परंपरा में पूर्व आचार्य से जाकर ये पता लगाना कि इनको उन्होंने ये निर्देश, आदेश, अधिकार दिया है उस गुरु परंपरा में गुरु बनने के लिए. That's the easiest way. ये सबसे आसान तरीका. And of course that entails that we have intelligence and faith that the previous acharya is bona fide member of parampara. और इसके पहले हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जो पूर्व आचार्य इस परंपरा के प्रमाणिक व्यक्ति हैं. So therefore he has that qualification and authorization and ability to authorize. और इसीलिए उनको ये अधिकार है, योग्यता है और क्षमता है कि वो आगे वाले व्यक्ति को अधिकार दे सकते हैं. And no one else does. और उनके अलावा कोई नहीं कर सकता.
Does that help you? क्या आपकी थोड़ी मदद हुई और So if I understand the okay. Hare Krishna. If I understand, before thinking about your guru, you have What's happening with that? Так, что там с нашим человеком происходит? Okay, relax. Расслабься. Sit there. Сиди आप वहीं बैठिए All right. ठीक है if I understand, before thinking about who is your guru, you have to. Who's your guru? आपके Who's your mama? आपकी माँ कौन है आपकी माँ कौन है What is it? क्या है इसका It's like a gang, you know. It's like, who's your mama? जैसे कोई न्याय का व्यवहार है Who's your daddy? Who's your daddy? आपके My पिताजी English is कौन not है so कौन है good. आपका Sometimes. You know, sometimes I would travel in some temple, ISKCON temple, but then people would come up to me and say, who's your guru? कभी मैं इस बार में जाता हूँ अलग अलग जगहों पे वो जाते सब मुझे कहते हैं आपके गुरु कौन है You're my guru. आप है मेरे गुरु What do you want me to do? You're my guru. आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं आप है मेरे गुरु So, फिर sorry. No क्षमा problem. कीजिएगा It just seems so rude, doesn't it? सुनने बहुत रूड लगता है No. How long are you going to be here? कितने समय रहने वाले हैं आप यहाँ पे Who's your guru? कौन है आपके गुरु Show your papers. You have papers? आपके कागजात दिखाइए आपके कागजात हैं कि नहीं What's your program? आपका प्रोग्राम क्या है यहाँ That one I got many times. You know, someone just, some authority walks up and says, what's your program? ये मुझे कई बार मिला है जब यहाँ के आसपास के अधिकारी मुझे पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है यहाँ And I said, just to follow Srila Prabhupada's program. मैं कहता हूँ श्रील प्रभुपाद का प्रोग्राम फॉलो करना है And they get very bewildered, you know. और फिर वो पूरे भ्रमित हो जाते हैं So, Okay. what's your program? आपका क्या प्रोग्राम है For this, before thinking about Guru, you are talking about your surrendering to Krishna. But I think about surrendering. About surrender? Surrender. About surrendering. Yeah. Surrendering. Yeah, surrender. Yeah. About surrendering. You can just follow some instruction that are the instruction of like the maybe follow the Yellow brick road. That? Follow the yellow brick road. The yellow. I don't know what is yellow. No, it's just But I think you can just act like so do everything that the other devotees tell you that is good, and but what's devoted? like devotee, but about like Prabhupada, what Prabhupada said. Okay, so follow some instruction. Okay. Whose instruction? Who? Krishna's instruction, Yeah. right? Srila Prabhupada's instruction. Yeah. This Right. And but obviously, I think I speak about me. I'm just entering into this world, and sometimes I try to act like this, but something like my mind is go other side. Okay, like maybe you don't eat. Maybe you don't go with girls, with every girls you see. Don't But, go with the God? with girls. He says Yes. he's trying to. Yeah, but you're Italian, so it's going to be very difficult. It's going to be really tough.
तो आप इंग्लिश हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि लड़कियों के You've got a सामने big challenge in front of you, man. आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। You better become transcendental really fast. आपको बहुत जल्दी दिव्य स्तर पे आ जाना चाहिए। That's my best advice to you. ये मेरा सबसे श्रेष्ठ सलाह होगा आपके लिए। I mean, sometimes you see a good girl. Like Maya. And it's Like Maya. Maya. Sometimes Maya influencing you. No, but माया मानी जब कभी-कभी भटका देती है। is normal for What? I think it's normal. yeah. Yeah, for a demon, it's very. But I want to try to become less A than devotee. they. You want to be devotee or a demon? Yeah. You want to be a normal demon or you want to be a normal devotee? तो आप एक सामान्य असुर बनना चाहते हैं, सामान्य भक्त बनना चाहते हैं। 50-50. Trying to become a little devotee maybe after more big. After you're a better demon. पहले मैं थोड़ा भक्त बनूंगा और उसके बाद और बेहतर और अच्छा असुर बनूंगा। बड़ा बड़ा। So does that mean that you think if you have uncontrolled mind and senses in sense gratification you can be peaceful and happy? You believe that? तो आप सोचते हैं अगर आपके मन और इंद्रिय आपके नियंत्रण से बाहर हो, आप इंद्रिय तृप्ति करें तो आप सुख शांति रह सकते हैं। Sorry. So if you have mind and senses are not controlled, तो आपके मन और इंद्रिय अगर आपके नियंत्रण में नहीं है, do you think you can be peaceful and happy? आप सोचते हैं कि आप सुखी और शांत रह सकते हैं? Obviously. Oh, Sorry, maybe I don't understand. no, because you're saying you might still be attracted to this idea, right, of Maya? क्योंकि आप कह रहे हैं आप माया के इस प्रभाव से आकर्षित होते हैं। No, I mean that sometimes you can act, but your mind can Be distracted. yeah, distracted like you because how to focus to real surrender. The real question is Right. how to focusing to real surroundings. Okay, what is exactly surroundings? This is the question. Okay. It's when you tell Krishna, I don't want to be a demon anymore, I want to become really devotee. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि माया अक्सर हमारा मन भटकाती रहती है, तो कैसे हम इसके बीच में हम कृष्ण को शरणागत कर सकते हैं? और शरणागति का मतलब क्या है? तो गुरुदेव बता रहे हैं जब आप ये फैसला करते हैं कि आप कृष्ण को शरणागत करना चाहते हैं, आप असुर नहीं बनना चाहते हैं, आप भक्त बनना चाहते हैं, तब ये शरणागति है। You may have material attraction, you may have material attachment, you may have materially conditioned, you may have all of this there, but if in your heart of hearts you say, I don't want that, I want Krishna, I want to surrender to Krishna, but I need help how to overcome all of those things. तो अगर आपके पास भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आसक्तियां हैं, भौतिक आकर्षण है, इन सब के बावजूद आपके पूरे हृदय से आपकी ये इच्छा है कि तब इसके बावजूद भी मैं कृष्ण आपको शरणागत करना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, तब वो आपको और मुझे बहुत सारी मदद की ज़रूरत है। So all of those things is obstacle, impediment to be able to fully surrender and serve Krishna wholeheartedly. तो ये सारी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं कृष्ण को पूर्ण शरणागत कर पाने के लिए पूरे हृदय से। So now you need to, how do you get purified and freed from all of those things? तो आपकी ज़रूरत है कैसे आप इन सारी चीज़ों से शुद्ध होकर मुक्त हो सकते हैं? Because these attractions, attachments are very deep rooted. क्योंकि ये आकर्षण और आसक्तियां बहुत गहराई से There's so much heavy conditioning, heavy, how do you say, bad habits. तो ये बहुत भारी हमारे ऊपर बद्ध अवस्था है या बुरी आदत कह सकते हैं इसको। So all of this thing has to be eliminated. तो ये सारी चीजों को बाहर निकालने की It जरूरत has है। to be cleansed up out of the heart and consciousness. पूरे हृदय चेतना से इसको साफ करने की जरूरत है। So to do that, Krishna sends the Guru इसको करने के लिए कृष्ण गुरु भेजते हैं to be able to help us how to purify and get free from all of these impediments, obstacles, attachments, which are not allowing us to more seriously surrender to Krishna. ताकि हम लोग मुक्त कर सके इन सारे आसक्तियों से, बाधाओं से, ताकि हम जो हमें रोक रहा है कृष्ण को पूर्ण शरणागति करने से। Because this uncontrolled mind and senses, material attraction, material attachment
bodily conception of life is the spiritual disease. क्योंकि ये अनियंत्रित मन और इंद्रिय शारीरिक प्रति आसक्ति और इच्छाएं ये हमारी सारी समस्याओं का जड़ है. So how do we get away from this bodily conception of I, me and mine? तो कैसे शारीरिक विचारधारा से मैं, मुझे और मेरा से हम बाहर निकल सकते How do we come to the soul platform? कैसे हम आत्मा के स्तर में आ सकते हैं where we can do Sanatan Dharma or Bhakti, devotional service to the Lord. सनातन धर्म भक्ति कर सकते हैं. That can only be done on soul platform. और ये केवल आत्मा के स्तर पे किया जा सकता But है. we have so much bodily consciousness, bodily identification, misidentification. जहाँ हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ये शरीर मानकर चल रहे हैं, शरीर की विचारधारा में. And that's a very deep rooted. और ये बहुत ही गहरी समस्या है. So if we realize our conditioning, तो अगर हम अपनी बद्ध अवस्था को महसूस कर पाएं and we realize honestly and seriously the impediments and obstacles to our full surrender to Krishna, और हम बहुत गंभीरता से समझ पा रहे हैं ये सारी बाधाएं, रुकावटें जो कृष्ण को पूर्ण शरणागति के लिए हमें रोक रही हैं. so how much are we trying to overcome that? हम कितना ज़्यादा इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे How much do we want to get free or purified from all of that? हैं, कितना ज़्यादा हम इससे मुक्त होकर शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं. That's the question. ये है प्रश्न. So Krishna is the witness and the judge of that. तो कृष्णा इसके गवाह हैं, वो इसका निर्णय करेंगे. Right? We're not the witness and the judge of anybody. हम किसी के भी गवाह और उसका निर्णय नहीं करेंगे. Krishna will be the judge. कृष्णा निर्णय करेंगे. And if he sees that we are serious, sincere enough, then he'll send us bona fide guru और जब वो देखते हैं हम गंभीर और एकनिष्ठ हैं, तो वो हमें गुरु भेजते हैं, who can help us to become qualified जो हमें मदद करेंगे कैसे हम और योग्य बन and सकते understand step by step how to become qualified, हैं. और धीरे-धीरे हर एक कदम पे हम सीख सकते हैं कैसे हम योग्य बन सकते what हैं, is required, क्या जरूरी है, because they share their faith and their realization क्योंकि वो अपना श्रद्धा और अपना साक्षात्कार बांटते हैं according to Guru Sadhu and Shastra. गुरु साधु शास्त्र के आधार पे. And they understand all of the subtleties of that, और वो the execution of that. और इसके भीतर की सारी सूक्ष्म चीजों और कैसे इसको पूरा किया जा सकता है. So they can more specifically explain it in a way that we can understand it so that we can better execute it. तो बहुत ही विशेष तरीके से हम इसे समझा सकते हैं ताकि हम इसे बेहतर तरीके से कर सकें. So two mercies required, mercy of Krishna and mercy of Guru. दो कृपा की जरूरत है, कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा. In this way, then it's possible to become qualified, और इस तरीके से ये संभव हो पाएगा योग्य बनने Purified. शुद्ध होने के लिए, especially by hearing from them. विशेष करके उनसे श्रवण करके. Thank you. And you see, we talked yesterday about surrendering to Krishna in the heart and this meditating on the Lord's lotus feet while you're chanting. Did you try to do that? और हमने कल जो बात की कि अपने हृदय में कृष्ण के चरण कमल को ध्यान लगाना, उनको शरणागत करने का प्रयास करना, क्या आपने इसका प्रयास किया? Did you try to do it? क्या आपने करने It का प्रयास sounds किया? easy, right? सुनने में बहुत आसान लगा नहीं? Were we able to do it? लेकिन क्या हम कर पाए? Why not? क्यों नहीं कर पाए? Because mind not allowing to do. क्योंकि मन उसे करने नहीं दे रहा. Because we have other distraction, other disturbance, other loves, other attachments, attractions, so therefore we're not able to do it, even though it sounds so simple and no other process can compare to that. और ये हम क्योंकि बहुत ज़्यादा भटके हुए थे, हमारे भीतर और भी दूसरे तरह के प्रेम थे, दूसरी आसक्तियाँ थी, तो हम भटके हुए, हम इसको बहुत सरल निर्देश है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा नहीं कर पाए. So you see, if we just say, "Oh, I'm devotee, I'm already Krishna conscious, I'm already surrendered," right? We're not understanding the reality of our condition. तो अगर हम कह रहे हैं हाँ मैं भक्त हूँ, मैंने कृष्ण को शरणागत किया है और मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसका मतलब हमने स्थिति को सही तरीके से समझ नहीं पाया. We can barely keep our mind for even one moment on Krishna's lotus feet within the heart. तो हम मुश्किल से एक कुछ क्षण के लिए भी कृष्ण के चरण कमल में अपना ध्यान नहीं लगा पाए अपने हृदय में. What to speak of chanting attentively, giving up offenses. तो पूरे ध्यान पूर्वक जप करना और सारे अपराध निरपराध जप करना, इसका फिर तो बहुत. So even though it's so simple, तो यद्यपि ये बहुत सरल है, it's the secret of success. ये सबसे श्रेष्ठ सफलता का रहस्य है. No other process can even compare to what Prabhupada said. प्रभुपाद ने कहा इसकी तुलना में कोई प्रक्रिया है भी नहीं. Krishna says there's no better process to become enlightened, कृष्ण ने बताया इससे कोई बेहतर प्रक्रिया नहीं है अपने आप को जागृत करने की. and yet we cannot do it और फिर भी हम उसको नहीं कर पाएंगे sufficiently. पर्याप्त रूप से. Such is our condition. ये हमारी स्थिति है.
So then what can you do? तब आप क्या करोगे? Then what will you do? अब आप क्या करोगे? Then you just come to the class तो आप बस क्लास में आइए and pray that Gurudev can speak in such a way that we can get some type of transcendental or spiritual understanding or change of our consciousness. कि गुरुदेव इस तरीके से कथा कर पाए और प्रार्थना करें कि वो हमारी इस चेतना को दिव्य बना पाए और ऊपर उठा पाए, बदल पाए. I remember when I would listen to my spiritual master speaking, by his mercy, he would purify my consciousness so much. और मैं जब अपने आध्यात्मिक गुरु श्री गौर गोविंद महाराज से सुनता था, उनकी कृपा से वो मेरी चेतना को इस तरीके से शुद्ध करते थे. Just by his purity, his empowerment, his mercy, just by trying to hear him, it would actually cleanse and purify my consciousness. तो उनकी शक्ति से, उनकी शुद्धता से, उनके सशक्तिकरण से वो मेरी चेतना को इस तरीके से शुद्ध कर पाते थे उनकी केवल कथा के माध्यम से. And then when I was in much nicer consciousness, और तब मैं अच्छी चेतना में होता था. then I could actually pray consciously और तब मैं अपनी पूरी चेतना से प्रार्थना कर पाता and था. more seriously, more sincerely, बहुत ज़्यादा गंभीरता से और एकनिष्ठता से. while I was hearing from him. जब मैं उनसे सुन रहा था उसी समय. So my chanting was not able to bring me to that state of consciousness or seriousness in my prayers. और मेरा खुद का जब मुझे इस तरह की गंभीरता, एकनिष्ठता मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी चेतना में ऐसा नहीं लेकर आ पा रहा. But if I could just sit and try to sincerely hear nicely, लेकिन अगर मैं केवल बैठ के और एकनिष्ठता से केवल सुनने का प्रयास करता था, by Krishna's mercy, Guru's mercy, then you could get this Sacheto Dapana Marjanam. तो कृष्ण कृपा से, गुरु की कृपा से तब आपको ये चेतो दर्पण मार्जन मिल You सकता can है. get this purification of your consciousness. आपको ये चेतना का शुद्धिकरण मिल सकता है. And I remember thinking that, yes, I don't want to be Maya Das anymore. I want to become Krishna Das. और मुझे याद है मैं इस तरह से प्रार्थना कर रहा होता था कि मैं अब माया दास नहीं रहना चाहता, मैं कृष्ण दास. So I saw the more I would listen to my Gurudev speaking, the more I would start desiring more consciously and strongly that I don't want to be Maya Das, I want to be Krishna Das. तो मुझे याद है मैं जितना ज़्यादा मेरे गुरुदेव को सुनता था, उतना ज़्यादा मेरी चेतना, मेरी इच्छा और ज़्यादा गंभीर एकनिष्ठ होने लगती थी कि मैं माया दास नहीं बनना चाहता, कृष्ण दास बनना चाहता हूँ. So if the result of hearing from the spiritual master is that we are consciously, seriously saying, I want to more fully surrender to Krishna, that's a very good sign. तो अपने आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करके आपके भीतर की इच्छा और प्रार्थना और ज़्यादा गंभीर चेतना और एकनिष्ठ होती जा रही है कि मैं कृष्ण को शरणागत करना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा संकेत है. That means we're properly hearing from proper association. इसका मतलब हम सही तरीके से सुन रहे हैं, सही संग से. Because otherwise, how can we be praying like that? वरना हम ऐसे तरीके से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? We'd be distracted thinking about whatever we were distracted about previously. तो हम भटके रहेंगे उस चीज के प्रति जिससे हम पहले से ही भटके रहते हैं. I remember I talked to one of my godbrothers, when I was hearing from my Gurudev, I thought everybody was hearing the same. और मुझे याद है मैं अपने गुरु भाई से बात कर रहा था और मुझे लगता था कि जब मैं अपने गुरुदेव से सुन रहा हूँ, सभी लोग मेरी तरह ही सुन रहे हैं. And then my godbrother was saying that I could never really hear Gurudev. और मेरे गुरु भाई ने कहा मैं कभी असल में गुरुदेव को सुन नहीं पाता था. Because he was worrying about some other business. क्योंकि वो किसी व्यापार के बारे में हमेशा चिंता में रहते थे. So he found it easier just to go do some work तो उनको and raise some money to help build the temple. तो उनको ज़्यादा आसान लगता था बाहर जाके कुछ काम करना, कुछ पैसे लेकर आना और मंदिर बनाने के लिए कुछ मदद करना. So that was his contribution, that was his seva. तो वो उनका योगदान, उनकी सेवा थी. That's what he could do. और यही वो कर सकते थे. But I was under the impression that everybody's hearing the same लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सभी लोग एक जैसा सुन रहे हैं and realizing the same. और सभी को एक ही अनुभव हो रहा है. But when I would discuss with everybody, they were not discussing same thing. लेकिन जब मैं उनसे बातचीत करता था, चर्चा करने में ये सभी लोग एक जैसी चर्चा नहीं करते थे फिर. So if they, my godbrothers want to be guru, but then you never heard from Gurudev properly, तो अगर मेरे गुरु भाई गुरु बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने गुरुदेव से सही तरीके से श्रवण नहीं किया and you've not properly understood it, और अगर सही तरीके से समझा भी नहीं and you cannot speak it, और आप उसको बोल भी नहीं सकते, then how you're saying that you're authorized to be a guru? तो कैसे आप कह सकते हैं आप अधिकारी व्यक्ति हैं गुरु बनने के लिए? And because I point that out, और
क्योंकि मैंने उसको दिखाया then they don't like me. और उनको ये पसंद नहीं आया, I'm problem for them. मैं उनके लिए समस्या हूँ। So they have to take me down one way or another. तो उन्हें मुझे नीचे गिराना होगा किसी न किसी तरीके से। And this is always like that. और ये हमेशा ऐसा ही होता आया है, Because everybody wants to be the guru. क्योंकि सभी गुरु बनना चाहते हैं, But they don't want to do it in a scientific, authorized way or process. लेकिन वो उसको वैज्ञानिक तरीके से, प्रमाणिक, आधिकारिक तरीके से नहीं करना चाहते हैं। They want to do it in a cheating way. ये उसे ठगने की तरीके से करना चाहते हैं। And then if you're doing it cheating way and you never heard properly, how you can present it properly? और आप ठगने की प्रक्रिया से कर रहे हैं, ना खुद कभी सही तरीके से सुना, तो कैसे आप उसको सही तरीके से करने वाले हैं? That's why nobody is talking about this. इसीलिए इस चीज के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। Make sense? आप समझ पाए? Can we read a verse? क्या हम एक श्लोक पढ़ Can we read a सकते shloka? हैं? एक श्लोक पढ़े हम? Maybe you'll get more faith हो सकता है आप लोगों को थोड़ी और श्रद्धा मिलेगी if I quote the authority. अगर मैं कुछ आधिकारिक शास्त्र बातें कर पाऊँ। But this, up to this point, is a nice discussion before we read this particular verse, लेकिन अब तक हमने काफी अच्छी चर्चा की इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने से पहले, because a lot of these points are actually within this verse. क्योंकि बहुत सारी ये सारी बातें इस श्लोक के भीतर ही मौजूद हैं। And this is in the 18th chapter, the conclusion, perfection of renunciation. और ये 18वां अध्याय संन्यास की सिद्धि। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Please repeat. कृपया दोहराइए। Chetasa. Sarvakarmani. Mai. Sannyasa. Matpara. Buddhi Yogam. Upashritya. Machita. Satatam. Bhava. Chetasa Sarvakarmani. Mai Sannyasya Matpara. Buddhi Yogam Upashritya. Machita Satatam Bhava. Chetasa Sarvakarmani. Mai Sannyasya Matpara. Buddhi Yogam Upashritya. Machita Satatam Bhava. Chetasa. By intelligence. बुद्धि से, Sarvakarmani. All kinds of activities. सभी तरह के कर्म Mai. Unto me. मुझ में Sannyasya. Giving up. त्याग करके Matpara. Under my protection. मेरे रक्षण में Buddhi Yogam. Devotional activities. भक्ति Upashritya. Taking shelter of. आश्रय लेकर Machita. In consciousness of me. मेरी चेतना में Satatam. 24 hours a day. दिन के 24 घंटे Baba. Just become. केवल बनो। Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। Krishna instructing Arjuna. कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, And he telling him that in all of your activities, just depend upon me. उनको बता रहे हैं सभी कर्मों में मेरे ऊपर आश्रित रहो, Work always under my protection. केवल मेरे रक्षण में कार्य करो। In such devotional service, be fully conscious of me. और ऐसे भक्ति में सेवा मेरी पूर्ण चेतना में रहो। Please repeat. कृपया दोहराइए। In all of your activities, just depend upon me. And work always under my protection.
In such devotional service, be fully conscious of me. Purport of Shloka. श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. तो जब कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वो इस जगत के स्वामी के रूप में कार्य नहीं करता। Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. जैसे सेवक केवल परम मालिक के निर्देश के आधार पर कार्य करता है। A servant has no individual independence. तो सेवक का कोई व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं होती। He acts only on the order of the master. वो केवल मालिक के आदेश के आधार पर कार्य करता है। A servant acting on behalf of the Supreme Master तो जो सेवक परम मालिक के आधार पे निर्देश के आधार पे कार्य कर रहा है is unaffected by profit and loss. वो लाभ और हानि से प्रभावित नहीं रह होता। He simply discharges his duty faithfully वो सरलता से अपना कर्तव्य श्रद्धापूर्वक करता है in terms of the order of the Lord. भगवान के आदेश के आधार पे। Now one may argue that Arjuna was acting under the personal direction of Krishna. तो कोई ये तर्क कर सकता है कि अर्जुन सीधे-सीधे कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशन में कार्य कर रहे थे। But when Krishna is not present, how should one act? लेकिन जब कृष्ण मौजूद नहीं हो तो कैसे कोई कर्म कर सकता है? If one acts according to the direction of Krishna in this book, अगर कोई कृष्ण के निर्देशन जो इस किताब में बताया गया उसके आधार पे कार्य करता है as well as under the guidance of the bona fide representative of Krishna, और साथ ही साथ कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य then करता the है result will be the same. तो परिणाम बिल्कुल एक समान होगा। The Sanskrit word matpara is very important in this verse. तो ये संस्कृत शब्द मतपरा यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। It indicates that one has no goal in life save and except acting in Krishna consciousness. बताया जाता है जीवन में और कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के Just to satisfy Krishna. केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। You want to go over there so you can hear the translation? क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं ताकि आप अनुवाद को सुन सकें? Your assistant is back. आपका असिस्टेंट वापस आ चुका है। We had to save Devaki from the Matajis. हमें देवकी को माता जी से थोड़ा बचाना He है। was surrounded by all the सारे Matajis. माता जी से घिरे हुए हैं। He was looking a little nervous. थोड़े सहमे हुए लग रहे थे वहाँ। Now he feels stronger. अब उनको थोड़ा शक्तिशाली महसूस हो रहा है। So while working in this way, one should think of Krishna only. इस तरीके से कार्य करते समय केवल कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। And should say, I have been appointed to discharge this particular duty or service by Krishna. और ये मानना चाहिए, ये जानना चाहिए कि मुझे ये विशेष कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है कृष्ण के माध्यम से। And while acting in such a way, one naturally has to think of और Krishna. इस तरह से कार्य करते समय स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन होगा। This is perfect Krishna consciousness. ये है पूर्ण कृष्ण भावनामृत। You want to put the fan on? पंखे को चालू करना चाहते हैं? Why don't you put the fan on? पंखे को चालू कर लीजिए। No, turn it off. Is that all right? बैठ के आवाज। You look worried. आप पूरे चिंता You में like this instruction? आपको ये निर्देश पसंद आया? The inverter is making sound. Huh? We'll have to switch it on. The inverter is not able to take the load, so Oh, that one's not good? Is the lights the same as the fans? fans taking more power. Oh, it takes more power. That's it. Okay. So when one's doing the service, one should think, I've been appointed to discharge this particular service by Krishna. तो अपनी सेवा करते समय किसी को ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे ये विशेष सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है कृष्ण के माध्यम से। And while acting in such a way, one naturally has to think of Krishna. और इस तरीके से कार्य करते समय किसी को स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन होगा। This is perfect Krishna ये consciousness. है पूर्ण कृष्ण भावनामृत। One should, however, note that after doing something whimsically, लेकिन किसी को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन के इच्छा से कुछ भी करके
He should not try to offer that result to the Supreme Lord. उस फल को हमें परम भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। That sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. इसे कृष्ण भावनामृत में भक्ति नहीं माना जाता। One should act according to the order of Krishna. किसी को केवल कृष्ण के आदेश के आधार पर कार्य करना This is a चाहिए। very important point. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And that order of Krishna comes through the disciplic succession और ये कृष्ण का आदेश प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से आता है। from the bona fide spiritual master. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से। Therefore, such a spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. इसलिए ऐसे आध्यात्मिक गुरु का निर्देश जीवन में प्रमुख कर्तव्य मानना चाहिए। If one gets a bona fide spiritual master and sincerely acts according to his direction, तो अगर किसी को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं और एकनिष्ठता से उनके निर्देशन में वो कार्य करता है, then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. तो कृष्ण भावनामृत में सफलता निश्चित है। Om Jnana-timirandhasya Gananjana Chalakaya Chakshunatandana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation: in all of your activities, just depend upon me. Work always under my protection, and in such devotional service, be fully conscious of me. अपने सारे कार्यों में मुझ पर आश्रित रहो, मेरे रक्षण में कार्य करो और ऐसी भक्ति में सेवा में पूर्ण मेरी चेतना में रहो। So when we read this this purport, so many times Srila Prabhupada is just saying one must work under the direction of the Supreme Lord. One must receive the instruction from the Supreme Lord. तो इस तात्पर्य में आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी कई बार बता रहे हैं कि आपको परम भगवान के आदेश के आधार पे भगवान के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. जब कोई सेवक के रूप में कार्य करता है तो इस जगत के स्वामी के रूप में कार्य नहीं करता। इस तरह से सेवक केवल मालिक के आदेश के आधार पर कार्य करता है। Such a servant has no individual independence. तो ऐसे सेवक की कोई व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं। He acts only on the order of the master. वो केवल मालिक के आदेश के आधार पर कार्य करता है। He simply discharges his duty faithfully in terms of the order of the Lord. वो केवल अपनी सेवा श्रद्धापूर्वक भगवान के आदेश के आधार पर कार्य करता रहता है। If one acts according to the direction and instruction of the Lord, अगर कोई भगवान के मार्गदर्शन निर्देशन के आधार पर कार्य करता है, as spoken by Krishna in this book and under the guidance of the representative of Krishna, then the result will be the same as that Arjuna got. जैसा इस भगवत गीता में बताया गया है, श्री कृष्ण ने बताया है और साथ ही साथ कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि, तो परिणाम बिल्कुल एक समान मिलेगा। I have been appointed to discharge this particular duty or service by Krishna. मुझे ये विशेष सेवा करने की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है कृष्ण के माध्यम से। And while acting in such a way, then one will naturally be able to think about Krishna. इस तरीके से कार्य करते समय कोई स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन कर पाएगा। That is perfect Krishna consciousness. यही है पूर्ण कृष्ण भावनामृत। You just open the door now? Yes, Gurudev, because we need to switch off the fan. This inverter will go away. Why did it take so long for us to figure that out? हमें इतना लंबा समय क्यों लगा इस छोटी सी चीज पता लगाने में? So the door was open, but it was too much wind and Oh. it closed. Oh, is that why Mataji is tired from the wind? तो इसीलिए क्या माता जी थक गई है, हवा बहुत ज्यादा तेज आ रही Or है, from the mind? या उनके मन की वजह से थक गई है? What is making you tired? कौन क्या आपको ज्यादा थका? That is an interesting question. ये है बहुत दिलचस्प सवाल। You're from Russia. आप रूस से हैं। You're used to the cold, don't you? ऐसी ठंड की तो आपको आदत है। Now they stay in India a little, now they're sensitive, you know? अभी हमारे कुछ दिन रह गए, अभी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। Right? They're coming from Siberia, a freezing place, right? Now they're here for a couple of weeks. Now they're like, oh, it's cold. साइबेरिया से आ रहे हैं, दुनिया के सबसे ठंडी जगह से, और यहाँ इनको थोड़ी ठंड लग रही है, यहाँ ठंड लग रही The है। wind's a little cold. ये हवा बहुत ठंडी है।
It's 40 below zero there, right? इनके वहाँ पे 40 0 से 40 डिग्री नीचे का तापमान That रहता was like a little wind. It's like, oh, oh. है और यहाँ थोड़ी सी हवा ठंडी हवा आ रही है और ये इस तरह से कर रहे हैं I'm disturbed. मैं परेशान हो गया I'm sorry. मुझे क्षमा कीजिएगा This is my bad habit. ये मेरी बुरी आदत है I make fun and it has some truth to it, so it's a little biting humor, you know? तो मैं कुछ मजाक करता हूँ लेकिन उसके भीतर कोई सत्य होता है तो ये कई बार कड़वा लगता है But not like the wind, you know? लेकिन ये हवा की तरह नहीं है So this is all orders, instruction from Krishna, तो ये सारे आदेश और निर्देश कृष्ण के हैं right? It's not that you just do anything whimsically and say, oh, Krishna, that was for you. ऐसा नहीं कि आप मन की इच्छा से कुछ भी कर देंगे और कहेंगे कृष्ण ये मैंने आपके लिए किया Prabhupada said that sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. प्रभुपाद बताते हैं इस तरह का कार्य कृष्ण भावनामृत में भक्ति नहीं माना जाता है And you know, we say, okay, Krishna, I did this, but I did it for you. अब ये नहीं कह सकते कृष्ण मैंने ये किया आपके लिए किया And Krishna's like, well, I didn't ask for that. कृष्ण कहेंगे मैंने तो करने के लिए बोला नहीं था And therefore, I never wanted it. और मुझे तो कभी चाहिए भी नहीं था So why I should accept it? तो मैं इसको स्वीकार क्यों करूँ So shouldn't that be the factor, whether it's pleasing to the Lord and whether He wants to accept it from us? तो क्या ये पहले देखा नहीं जाना चाहिए कि भगवान को ये सुख दे रहा है या नहीं और क्या भगवान को हम संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं उससे Is He just duty bound to accept it because we're saying, this is what I can do for you? तो क्या वो कर्तव्यबद्ध है इसको स्वीकार करने के लिए कि हम कहेंगे कि मैं आपके I लिए know बस you इतना ही- wanted this and this and that, but this is what I can do for you, Krishna. Be satisfied. मुझे पता है आप मुझसे ये चीजें कराना चाहते हैं लेकिन मैं यही कर सकता हूँ इससे आप संतुष्ट रहिए Take the essence, Krishna. कृष्णा इसका सार लीजिए So it cannot be whimsical. तो ये अपने मन की इच्छा से नहीं किया जा One सकता must receive the order and instruction from Krishna. किसी को आदेश और निर्देश प्राप्त करना होगा कृष्ण The से only reason we need a bona fide guru is Krishna's giving the instruction through the pure vaya medium. केवल एक ही मात्र कारण से हमें गुरु की जरूरत है क्योंकि कृष्ण ये निर्देश हमें उस शुद्ध माध्यम से ही देते हैं So if you convince Krishna you want to hear absolutely his instruction and you're going to try your best to execute the instruction, तो अगर आपने कृष्ण को आश्वस्त किया है कि वो आप उनके निर्देश को सुनना चाहते हैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करना चाहते हैं उनके निर्देश को पूरा करने के लिए then Krishna will give you a pure vaya medium spiritual master. तब कृष्ण आपको ऐसे शुद्ध माध्यम आध्यात्मिक गुरु प्रदान Because करेंगे then you need to hear Krishna's कि instruction तब आपको कृष्ण के निर्देश को सुनने की जरूरत inside है and outside. भीतर से और बाहर से भी One should act according to the order of Krishna. किसी को कृष्ण के आदेश के आधार पर कार्य करना That's what चाहिए it means to be a servant of Krishna. और यही है कृष्ण का दास होने का अर्थ That's what it means to be Krishna conscious. यही होता है कृष्ण भावनामृत होने का अर्थ Prabhupada said one should act according to the order of Krishna, and this is most important point. प्रभु बता रहे हैं किसी को कृष्ण के आदेश के आधार पर कार्य करना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है The order of Krishna comes through the disciplic succession of parampara, कृष्ण का आदेश परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है from the bona fide spiritual master. प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से I remember one devotee, he said, I have 5 shiksha gurus. मुझे याद है एक बार एक भक्त ने कहा मेरे पास 5 शिक्षक गुरु हैं At first I was like, wow, that's far out, that's fantastic. पहले मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है He's into collecting gurus, you know. सब एक गुरु जमा करते हैं So then I asked him, I said, well, what if each of those gurus tell you to do something differently? तो मैंने पूछा क्या होगा अगर हर एक गुरु उनमें से आपको कुछ अलग चीज करने को कहेगा Then how will you know which one of those instructions came from Krishna? आपको कैसे पता चलेगा उनमें से किनका निर्देश कृष्ण की तरफ से आ रहा था And then he never thought about that. और उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं He's actually, that's a good point. उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात थी Right? So if someone is bona fide authorized, let's just say they're all pure vaya mediums of Krishna. तो चलिए Right? मान लेते हैं कि वो सारे कृष्ण के शुद्ध माध्यम Well, wouldn't they all be saying exactly the same thing? तो क्या वो सारे लोग बिल्कुल एकदम एक ही बात नहीं करेंगे Right? So if everyone's pure vaya medium of Krishna and Krishna is using you, Krishna will tell you the same exact thing. How you have 5 different instructions? अगर सभी लोग कृष्ण के शुद्ध माध्यम है और कृष्ण सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको निर्देश देने के लिए तो कैसे 5 लोग आपको अलग अलग निर्देश बता रहे हैं It doesn't make any sense. इसका तो कोई अर्थ ही नहीं I was saying, I asked him, I said, what if one guru says,
take care of the cows, and the other guru says, be a teacher, and the other guru says, live in India, and the other guru says, go to Europe or go to America, right? How do you know which one Krishna really wants you to do? कैसा अगर आपको एक गुरु कुछ करने के लिए कहे, आपको कोई गाय पालने के लिए कहे, दूसरा गुरु कहे आप भारत से बाहर जाइए, तीसरा गुरु आपको कहे कि आप शिक्षक बन जाइए, इनमें से कैसे पता चलेगा कौन है असली गुरु? Because he would not really understanding what is the purpose of the guru. क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे असल में गुरु का उद्देश्य क्या है. He's thinking you just collect some guru and he gives you some knowledge and you just take some different tips and some points and you try to just put it all together and figure it all out. तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको बस गुरु ऐसे जमा करने की जरूरत है ताकि उनको कुछ ज्ञान मिले, कुछ सलाह मिल सके और अंत में उन्हें खुद पता लगाना है क्या करना है. It's like you're making like a big soup, जैसे आप एक कोई बड़ा सूप बना Someone रहे हैं. brings the carrots, somebody brings in some potatoes, कोई गाजर लाया है, कोई आलू लेकर आया brings है, in some beets, कोई कुछ बीट लेकर आया है. right? And then you just mix it all together, stir it up, and then you have your borscht, your soup, right? और आपने सब एक जगह मिलाया और आपने अपना सूप बनाया. Or you get everybody's opinion, it's like, I'm going around to all the gurus and I'm asking what is their opinion, या फिर आप सबका जो है विचार जमा कर रहे हैं, सारे गुरुओं के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपका क्या ख्याल है. And then like, of course, mother, father, they're also guru. और माता पिता भी गुरु हैं. And then my teacher in the school, he's also my guru. मेरे स्कूल के टीचर भी गुरु हैं. And then we have a family guru. और हमारा फैमिली गुरु भी है. And then we have the local temple, there's a guru there. और पास के मंदिर में भी एक गुरु है. And then we have an astrologer. और हमारा एक ज्योतिषी भी है. And then we have someone who reads our palm. और हमारा एक हाथ पढ़ने वाला पंडित भी है. Right? And then we, so then we just take everybody's opinion. तो अब सभी का सलाह जमा And करेंगे. just mix it all around. सबको मिलाएंगे, जुलाएंगे एक साथ. Like, it's like, what is it, like a special algorithm? You mix around everyone's opinion and then the final thing just comes out absolute? और ऐसा सबका विचार एक साथ जमा करके मिलाएंगे और अंत में एकदम परम सत्य निकल के Is आएगा. that how it works? क्या इस तरीके से ये कार्य करता है? So Prabhupada said, this is most important thing is, what does Krishna want? What is the order of Krishna? प्रभु बता रहे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पे कि कृष्ण का आदेश क्या है. One should act according to the order of Krishna. किसी को केवल कृष्ण के आदेश के आधार पे कार्य करना And चाहिए. this is very important और ये point. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. That order of Krishna comes through the disciplic succession of bona fide guru. और ये कृष्ण का आदेश परंपरा के माध्यम से प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है. That's why we need to understand Guru Tattva. इसीलिए हमें गुरु तत्व समझने की जरूरत है. Then Prabhupada said, therefore such a spiritual master's order, which Krishna is giving through the spiritual master, should be taken as the prime duty of your life. और श्रील प्रभु बता रहे हैं कि ऐसे प्रमाणिक गुरु का निर्देश जो असल में कृष्ण का निर्देश इसे जीवन का सबसे प्रमुख कर्तव्य माना जाना चाहिए. Prabhupada says to take the order instruction of your spiritual master as your life and soul is the secret of success in spiritual life. प्रभु बता रहे हैं अपने आध्यात्मिक गुरु के जीवन को अपना आत्मसात करना ये आपके आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य है. Because that's what Krishna is telling us through the spiritual master. क्योंकि यही हमें कृष्ण बता रहे हैं उस गुरु के माध्यम से. If one gets such a bona fide spiritual master अगर किसी को ऐसे प्रमाणिक गुरु प्राप्त होते हैं and can put faith that Krishna's instruction has come through pure by medium of the spiritual master, और अगर ये श्रद्धा मिल पाए कि कृष्ण का निर्देश उस शुद्ध माध्यम के से मुझे and प्राप्त हो then रहा with है sincere faith one tries their best to execute those instructions or direction, और उस एक निश्चित श्रद्धा से उस निर्देश को पूरा करने का अगर प्रयास किया जा रहा है then you get the mercy of the Guru, mercy of Krishna, तब आपको उस गुरु की कृपा कृष्ण की कृपा प्राप्त and होगी. then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. और कृष्ण भावनामृत में सफलता गारंटी है. So what are we doing to try to be Krishna conscious? हम क्या कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत होने के लिए? How are we going to understand, how to serve and please Krishna? हम कैसे समझ पाएंगे कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, कैसे कृष्ण को खुश Are you करना going है? to just ask Krishna? क्या आप कृष्ण And को Krishna पूछने will वाले हैं? directly tell you? और क्या कृष्ण आपको सीधे सीधे बताएंगे? One week it's like this, next week it's like that, एक हफ्ते next ऐसा week लगेगा, it's like this. दूसरे हफ्ते कुछ और, तीसरे हफ्ते कुछ और. Does that mean Krishna is like, he's, how do you say, chanchalam? इसका मतलब क्या कृष्ण भी चंचल है? Is he unsteady, like he's just constantly changing his instruction because he doesn't know what's best for you? कि वो भी हमेशा अस्थिर अपने निर्देशों में उनको पता नहीं करना क्या है.
won't it be steady instruction? क्या कृष्णा का निर्देश बिल्कुल स्थिर We have निर्देश to नहीं होगा? learn how to understand and execute more seriously and more in a qualified way every day. और हमें हर दिन ये सीखना हो कैसे हम कृष्णा के निर्देश को और योग्यता से पूरा करने का प्रयास कर So सकें। why always everything is chopping and changing? तो क्यों हमेशा चीजें बदल रही है, इधर-उधर हो रही है? Because whatever you're thinking and feeling, you're thinking that's coming from Krishna. क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये कृष्णा से आ रहा है। So because we're thinking and feeling many different things, then we're thinking, oh, now Krishna is making me think and feel this way. और क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं आए, तो आप सोच रहे हो कृष्णा मुझे ऐसा सोचने को मजबूर, ऐसा And then सोचवा the रहा है। next day it's like, oh, Krishna changed his mind. Now I'm thinking and feeling like this way. और अगले हफ्ते फिर आपके मन में कुछ और बातें आ रही है, वो आप सोच रहे हो कृष्णा मेरे मन में ये विचार डाल रहे हैं। Because we're devotees. क्योंकि हम भक्त हैं। So of course whatever we're thinking and feeling is coming from Krishna. बस जो हम सोच रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, सब कृष्णा से आ रहा है। Is there any question about that? इसमें कोई सवाल ही नहीं है। So we are all over the map. हम सभी जगह नक्शे में घूम रहे हैं। Right? Prabhupada even he says you cannot serve, Krishna will not accept your service directly. प्रभुपाद ने यहाँ तक ये भी कहा कि कृष्ण आपकी सेवा सीधे स्वीकार नहीं करने वाले। It must be ordered through his representative bona fide guru. ये उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होगा। So we're getting the instruction from Krishna through the guru, तो हमें कृष्णा का निर्देश गुरु के माध्यम से and प्राप्त we're होता है। offering that service back through the guru, and then he offers it to his guru, and then that guru offers to his guru, and then his guru offers to his guru, and then finally it gets to Krishna. और हम अपनी सेवा गुरु को अर्पण करते हैं, और गुरु वो सेवा अपने गुरु, वो गुरु उनके गुरु, और उनके गुरु, और इस तरह अंत में वो कृष्ण तक पहुंचता है। Not directly. सीधे नहीं। Now, if you do something directly and you're sincere, हो सकता है आपको सीधे कृष्ण के लिए कर रहे हो, आप एकनिष्ठ हो। right? So Krishna says, "Oh, this person sincerely wants to serve me," तो कृष्ण देखते हैं ये व्यक्ति एकनिष्ठता से मेरी सेवा करना and चाहता है, that's a nice mood of devotion. और ये बहुत अच्छा भक्ति का भाव है। Then he may reward you with the first installment of his mercy by sending you a bona fide spiritual तो master, वो आपको एक पुरस्कार दे सकते हैं, कृष्ण अपनी कृपा की पहली किस्त देकर अपने प्रमाणिक गुरु को भेजकर, by which we can become qualified and by which Krishna will accept through his disciplic succession. जिसके माध्यम से हम योग्यवान हो पाएंगे और कृष्ण हमें अपनी परंपरा में स्वीकार करेंगे। So how is it that so many gurus there, they're all saying the parampara and they're all telling something different? तो कैसे इतने सारे गुरु हैं, सभी कह रहे हैं वो परंपरा है, और सभी बिल्कुल अलग-अलग बातें कर रहे हैं, And then you're just collecting a bunch of opinions और आप सभी लोगों का अलग-अलग सुझाव जमा कर रहे हैं, and deciding what you want to do. और अंत में ये निर्णय कर रहे हैं आप क्या करेंगे। So we're just ultimately acting as our own guru, असल में अंत में हम खुद के ही गुरु हैं, because we're deciding finally what we think Krishna wants us to do. क्योंकि अंत में हम खुद ये फैसला कर रहे हैं कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। After listening to everybody's opinion, सभी लोगों का सुझाव सुनने के बाद I've come to the conclusion that Krishna wants me to do like this. मैं अंतिम निष्कर्ष पे ये पहुंचा हूँ कि कृष्ण मुझसे ये चाहते हैं, But that's not the process. लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है। That's not how Krishna has made the process. इस तरीके से कृष्ण ये प्रक्रिया नहीं That's बनाई not है। how Krishna gives his order and instruction. इस तरीके से कृष्ण अपने आदेश और निर्देश नहीं देते हैं। So little problem with that theory, right? तो इस कहानी में थोड़ी गड़बड़ है। It's an exacting science. ये बिल्कुल सटीक विज्ञान है। It's not just do anything and say, oh yeah, Krishna, that was for you. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर देंगे और अंत में कहेंगे कृष्ण मैंने आपके लिए किया ये। And when you start to see how serious and how narrow this path is, people's mind freak out. और आप जब देखते हैं कि रास्ता असल में कितना सकरा है, कितना गहरा पतला है, तो लोगों का मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। You see, but who's telling you must receive order and instruction? If Krishna. लेकिन कौन आपको कह रहा है आपको आदेश निर्देश प्राप्त करना होगा? ये So कृष्ण कह what रहे is हैं। Krishna's instruction? तो कृष्ण का क्या निर्देश है? So if you're just begging and crying for Krishna's instruction, won't Krishna make an arrangement to give you the right association to confirm what is his instruction? तो अगर आप कृष्ण के निर्देश के लिए भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या कृष्ण आपको ऐसा संग नहीं देंगे जहां से आपको कृष्ण अपना निर्देश आप तक पहुंचा सके? Any other question कोई अन्य प्रश्न or point? या कोई बात कहना चाहते हैं? Oh, there he goes. Not unusual. Is he cold?
क्या उन्हें ठंड लग रही है? What else should I know? और मुझे क्या जानने की जरूरत है? What have I misunderstood? अब बताइए मैंने क्या गलत? They're saying I'm deviated, right? लोग कहते हैं मैं थोड़ा भटका हुआ हूँ। So what in that presentation is deviated? तो मेरी प्रस्तुति में कहाँ आपको लगा कि मैं भटका हुआ हूँ? You want to attack me personally? Fine. ठीक है। But what am I saying that is not exactly correct? आप मुझे व्यक्तिगत मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए मैंने कहाँ कोई बात की जो गलत है? But because they don't want to know, लेकिन क्योंकि वो जानना चाहते नहीं, then you have to find some problem. तो फिर कुछ ना कुछ समस्या निकालनी है। Right? Why you don't have to listen to that person? क्यों इस आदमी को सुनना नहीं चाहिए? Right? Okay, somebody said to me after some time, well, I don't know if you're my spiritual master. किसी ने कुछ समय के बाद मुझे आके कहा, मुझे पता नहीं आप मेरे गुरु हैं या नहीं। And I said, no problem. मैंने कहा कोई दिक्कत I नहीं। never asked for this service. मैंने तो कभी ये सेवा करने के लिए किसी I'm not chasing after you. वरना मैं आपके पीछे भागने वाला हूँ। So if you don't feel comfortable, no problem. आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। But if you're so sincere and serious लेकिन आप अगर इतने गंभीर और एकनिष्ठ हैं to surrender to Krishna, कृष्ण को शरणागत करने के लिए, so what purifier medium of Krishna has Krishna sent to you? तो बताइए मुझे कृष्ण ने अपने कौन से शुद्ध माध्यम को आपके पास भेजा है? So you're so sincere, you're so serious, you're so intelligent, you're so wise. आप इतने एकनिष्ठ हैं, इतने गंभीर हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने चतुर हैं। What are you doing back there, man? आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के पीछे? Huh? What you doing back there? Миша, куда что ты делаешь? It's like a restless kid tonight, isn't it? आज रात ये Maybe he ate too many chilies or something. मिर्ची खा लिया है आज। Did he eat too many chilies? बहुत सारे मिर्ची खाई है आज। Too many chilies in the dal? दाल में बहुत सारे मिर्च डाल दिया। My mother used to say he has ants in his pants. मेरी माँ गाड़ी करती थी कि इनके पैंट में चींटियां घुस गई हैं। Tonight he has ants in his mind. तो इनके मन में जो बहुत सारी चींटियां घुस गई। Anyway, I'm just joking. मैं मजाक कर रहा हूँ। You know my jokes are harmless, right? आपको पता है मेरे जो मजाक है कोई नुकसान नहीं पहुँचाते लोगों को। Sham, शाम Shamala, Could you Shamalalala. could you talk more about the diksha and shiksha? Huh? The difference between the What? What is that? Can you talk more about the difference between Diksha and Siksha Guru? There's no difference. तो सवाल पूछ रहे हैं प्रभु क्या बता सकते हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बीच में क्या अंतर है? तो गुरुदेव बता रहे कोई अंतर नहीं है। If they're bona fide, अगर दोनों प्रामाणिक हैं then the equal, Chaitanya Charitamrita says they're equal and identical manifestation of the super soul. चैतन्य चरितामृत बताता है कि दोनों एक समान और बराबर प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं परमात्मा के। So are they both exactly saying the same thing that Krishna is telling you? तो वो What दोनों Krishna बिल्कुल wants from you? एक ही चीज बता रहे हैं जो कृष्ण आपसे चाहते हैं, जो कृष्ण आपको बोलना चाहते हैं। So something doesn't sound equal and identical. तो कुछ यहाँ पे दोनों एक समान और बराबर नहीं लग रहा। So at least one of them is not तो correct. कम से कम दोनों में से एक तो गलत है And maybe both of them are या not हो सकता है correct. दोनों ही गलत है। So intelligence and faith, who is bona fide authorized representative, that only comes from Krishna. तो ये बुद्धि और श्रद्धा किसको अधिकार मिला है, किसको सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है, ये केवल कृष्ण आपको ये बुद्धि श्रद्धा दे सकते हैं। You see, if someone does not have bona fide authorized guru, that means they didn't get mercy from Krishna. मान ली किसी के पास अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो उसको कृष्ण की कृपा नहीं मिली है अभी तक। So if they don't get mercy from Krishna, then what is the value of what they're thinking and feeling? What is the true value of that? अगर उनको कृष्ण की कृपा नहीं मिल रही है तो वो इतना सोच रहे हैं, इतना कुछ विचार कर रहे हैं, उनका अनुभव इसका क्या मूल्य है? If they're intelligent, if they're so sincere, so serious, so surrendered, then Krishna would have sent them to a bona fide guru. अगर वो इतने बुद्धिमान है, इतने गंभीर है, इतने एकनिष्ठ है, इतने चतुर है, तो कृष्ण उनको गुरु भेजेंगे।
If you didn't get Krishna's mercy, you didn't get Krishna's first mercy. अगर हमको ये गुरु नहीं मिल पाए, इसका मतलब कृष्ण की सबसे पहली कृपा उनको नहीं मिल पाई। So then who's controlling your intelligence, mind and senses? तो कौन आपके मन बुद्धि इंद्रिय को चला रहा है? And how accurate and absolute is that information? और वो जानकारी कितनी सही है? And why you're taking that as absolute? और क्यों उस ज्ञान को आप बिल्कुल परम सत्य मान रहे हैं? That's an interesting question. ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। What do you think, Sean? Make sense? आप समझ पा रहे हैं? So the person that you're listening to, they themselves are not bona fide and authorized. जिन लोगों को आप सुन रहे हैं, वो खुद प्रमाणिक नहीं है, आधिकारिक व्यक्ति नहीं है। Even as a disciple. यहाँ तक कि शिष्य के रूप में भी। So then you're going to accept someone who's not even a bona fide authorized disciple to now all of a sudden they're your bona fide authorized guru? तो जो लोग प्रमाणिक आधिकारिक शिष्य भी नहीं है, वो प्रमाणिक आधिकारिक गुरु आप उनको मान के उनको स्वीकार कर रहे हैं। Does that make any sense? तो इसका कोई भी अर्थ है? They're not even getting Krishna's first installment of mercy. उनको कृष्ण की कृपा की पहली किस्त भी प्राप्त नहीं हुई है। So what is the value of their analysis and their so-called intelligence, mind and senses? तो उनके इस आकलन का, इस नाम मात्र की बुद्धि और उनकी क्षमता का क्या अर्थ है? What makes them all of a sudden some absolute authority that has to be, you know, faithfully and loyally listened to? तो कौन सी चीज उनको एक प्रमाणिक अधिकारी बनाती है, जिनकी बात हमें इतनी श्रद्धापूर्वक ईमानदारी से सुननी चाहिए? What is their qualification? उनकी योग्यता क्या है? To think or to say anything? कुछ भी बोलने के लिए। Prabhupada disciple. Huh? Prabhupada disciple. What is disciple? तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद के शिष्य, गुरुदेव बताया शिष्य का मतलब क्या होता है? You're really disciple. You got real mercy from Krishna and from Krishna Parampara. Then present Guru Sadhu Shastra as it is. अगर आप असल शिष्य हैं, आपको कृष्ण परंपरा गुरु साधु शास्त्र की कृपा मिली है, तो उसे यथारूप में प्रस्तुत करके दिखाइए। Prabhupada said, many places Prabhupada said, I might be imperfect according to your estimation. प्रभुपाद ने कई बार कहा है, हो सकता है मैं आपके आकलन के आधार पर मैं आपको अयोग्य आदमी हूँ। But if I present to you perfect knowledge from a perfect source, लेकिन मैं अगर पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, and I present it to you perfectly, और पूर्ण तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, without adding or subtracting anything, ना तो उसमें कुछ जोड़े हुए ना घटाए हुए, that is my perfection. यही मेरी सिद्धि है। So what is your definition of perfection? तो आपकी सिद्धि की परिभाषा क्या है? Right? There's a lot of people, they may look like they're, Pakka Sadhu, and they're scholar, and all of this external thing may be there, but if they don't understand and didn't get mercy of Krishna's Parampara, then what is the value of all of their external presentation? तो कोई दिखने में बहुत पक्के साधु, बहुत बड़े विद्वान और बाहर से सारे गुण दिखाई दें, लेकिन अगर उनको गुरु कृष्ण की कृपा ना मिले और वो इस सिद्धांत को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, तो बाहरी चीजों का क्या अर्थ है फिर? Then better go just accept some Pakka Brahmana and call him your guru. तो हो सकता है जाके किसी पक्के ब्राह्मण को ढूंढ लीजिए और उसे अपना गुरु बना लीजिए। Because if they're real Brahmana, then they may manifest some nice Brahmanical quality. Right? तो अगर कोई असल ब्राह्मण है, तो अच्छे ब्राह्मणों के गुण दिखा पाएंगे। But does that mean that they understand Shuddha Sattva topic? लेकिन इसका मतलब भी क्या ये है कि वो शुद्ध सत्व के विषयों को समझते That's हैं? another level. ये एक और ऊपर का स्तर है। And without submissive or reception and surrender to bona fide Tattvavid Guru, how will you understand that platform of information? और सही विनीत भाव से श्रवण करके ऐसे तत्वविद गुरु को शरणागत किए बिना कोई कैसे इस तरह के चीजों को प्रस्तुत कर सकता है? Because you would have had to receive it from Krishna through his parampara. क्योंकि आपको ये प्राप्त करना होगा कृष्ण की परंपरा के माध्यम से। So where is that example that you understood that Krishna is speaking through his parampara? You got Krishna's intelligence, Prabhupada's intelligence, you came, you surrendered, and you did submissive or reception from Tattvavid Guru. Where is that in your resume? तो आपके रेज्यूमे में ये कहाँ दिख रहा है कि आप आए, आपने प्रमाणिक गुरु को शरणागत किया, आपको ये
साक्षात्कार हो पाया कि आप सीधे सीधे प्रभुपाद को के माध्यम से कृष्ण को सुन पा रहे हैं और प्रभुपाद की बातों को समझ पा रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर पा रहे हैं। And if that's not in your resume, that means you didn't get mercy. और आपके रिज्यूमे में ये बातें नहीं है तो इसका मतलब आपको कृपा नहीं है। And without that mercy, you're not properly qualified. और उस कृपा के बिना आप सही तरह से योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। And neither you understand this tattva vichar. और ना ही आप इस तत्व विचार को समझ सकते हैं। Therefore, you cannot speak it, and that's why they don't speak it. और इसीलिए ना तो वो बोल पा रहे हैं ना वो बोलते हैं। How can you speak something you didn't hear and you didn't realize? कैसे आप कोई ऐसी चीज बोल सकते हैं जो आपने पहले कभी सुनी ना हो, कोई साक्षात्कार ना किया हो उसका। So first is saying everything I'm saying is deviated. तो पहले उन्होंने ये कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ सब भटकी हुई बातें करता हूँ। And I said I'm just quoting Prabhupada, Guru Sadhu Shastra. और मैं कहता हूँ मैं केवल प्रभुपाद और गुरु साधु शास्त्र की बात कर And रहा they हूँ। say, yeah, but you're not quoting what we're फिर quoting. वो कहते हैं नहीं आप वो नहीं बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। And then it became, well, why Murali thinks that he's saying anything different from us? We're all saying the same thing. और बाद में वो ये कहने लगे मुरली ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं, वो भी हमारे जैसे ही बात कर रहे हैं। Which one is it? तो कौन सी बात है इनमें से? Is it deviated? I'm not speaking what you're speaking, quoting what you're quoting, or we're all quoting the same thing? तो क्या कौन सी बात सही है? क्या मैं भटका हुआ हूँ, मैं सही बातें नहीं कर रहा हूँ, और या फिर हम दोनों बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं? It seems like their position is like morphing. ऐसा लग रहा है कि उनका Changing. स्थिति जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है। Maybe they're getting persuaded by our presentation. हो सकता है वो हमारी प्रस्तुति से Maybe they're listening to all of the lectures on the YouTube and actually starting to realize, oh, Srila Govinda Swami really trained this person very well. हो सकता है YouTube पे हमारे प्रवचन सुन रहे हैं और सोच रहे हैं ओह श्री गौरव महाराज ने इस व्यक्ति को बहुत ही सही प्रशिक्षण दिया He है। seems to really be very competent with this information. वो देखने में ऐसा लग रहा है जिस जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं उसके प्रति बहुत अच्छा सटीक ज्ञान है उनको। And what happens is if you're faithful and competent in this information, they take it as arrogance. और वो लोग अगर आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, श्रद्धा है इस जानकारी, वो सोचते हैं इनके अंदर बहुत अकड़ है। But from spiritual point of view, my Gurudev said, what my Gurudev taught me, what I realized, his words, instruction, that's my asset. That's my spiritual asset. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे जो मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से श्रवण किया, जो साक्षात्कार किया, वो असल में मेरा धन है, आध्यात्मिक धन। Yeah. Why some devotees, by hearing, become more sincere and serious, and others don't? Like if they have the association with Prabhupada, how come by associating with Prabhupada and hearing from him, then they didn't become more sincere and serious and got that mercy? What is it? He said, how come some devotees become more sincere and serious by hearing? And like there's those devotees that had association of Srila Prabhupada, but they just didn't get the benefit. Is that right? Yeah. So why is some of them get the effects and benefits and others don't, right? तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद के को बहुत सारे लोगों का प्रभुपाद का संग मिला, लेकिन कुछ लोगों को उसका प्रभाव दिख पाया, कुछ लोगों को उनके संग और उनके श्रवण का प्रभाव नहीं मिला, तो ऐसा क्यों है? Because if the source is bona fide and authorized, empowered, क्योंकि अगर स्रोत प्रमाणिक है, आधिकारिक है और उसको शक्तिकरण प्राप्त है, then the opportunity is offered to everybody. तो मौका सभी को दिया जा रहा है। But only some will be fortunate enough and greedy enough and desiring to really understand it. और केवल कुछ ही लोग जो इतने भाग्यवान हैं, इतने लोभी हैं, जिनकी इच्छा है इसको समझ पाने की। Because if you're just passively listening, you'll pick up some benefit. क्योंकि आप बस बैठ कर किसी तरह सुन रहे हैं, तो आपको कुछ लाभ जरूर मिलेगा। But if you're very, very serious about the subject matter and very deeply analyzing and understanding it, then obviously you're going to get much more out of it. लेकिन अगर आप इस विषय के प्रति बहुत गंभीर हैं, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। And of course you have to love the subject matter. और अवश्य आपको विषय से प्रेम करना चाहिए। Right? I remember when I went to my statistics class. मुझे याद है जब मैं अपने सांख्यिकी के क्लास में गया था। I went one day. एक दिन मैं गया उस क्लास में। I bought the thick book, very expensive book. बहुत मोटी, बहुत महंगी किताब खरीदी। I thought I'm going to be a big businessman. मैं सोचा मैं बहुत बड़ा एक So you got to know statistics and economics, right? मुझे सांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। Then I sat in the front row और मैं सबसे आगे वाली with कतार my में बैठा big book.
और अपनी मोटी किताब लेके and I opened it up. और मैंने किताब खोली, It looked like something from Mars to me. ऐसा लगा कि मंगल के ग्रह की कुछ बातें लिखी हो। And they started talking, and in 1 minute I understood I don't want to be in this class. उन्होंने बात करना शुरू किया, अगले 1 मिनट में समझ गया मैं इस क्लास में नहीं रहना चाहता। This information is not meant for me. ये जानकारी मेरे लिए नहीं है। Maybe some other people are meant to receive all of that, not me. हो सकता है कोई और लोग इस जानकारी को सुनने के लिए बने हैं, लेकिन मैं नहीं। So then I realized I'm in the wrong lane. तो मैं समझ में आया मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। So I closed the book तो मैंने किताब बंद किया and I respectfully walked out of the class. और पूरे सम्मान से मैं क्लास से बाहर निकल गया। And I went to the registrar's office और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में गया and I changed my major और मैंने अपना विषय बदल लिया immediately. तुरंत ही। I understood. मैं समझ गया This is not for me. ये मेरे लिए नहीं है। So you have to really love the topic, isn't it? तो आपको विषय से प्रेम होना चाहिए, ऐसा If है। you're really eager and greedy and curious to understand it, it's much more helpful. तो अगर आप उत्सुक हैं, लोभी हैं, जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। If you're just showing up, it's like, okay, I have to take this class, you know. अगर आप आए ये दिखाते हुए कि मुझे ये क्लास में बैठना होगा, It's some useless, class, right? You have to take this class सीधा फालतू क्लास है, हमने as क्लास में part of नहीं your well-roundedness. आए। ये आपके सही रवैया का एक प्रदर्शन है। So you'll be a well-rounded mental speculator. तो आप एक अच्छे मनोधर्मी बनेंगे। You have to study different types of art in Europe. तो यूरोप के अलग-अलग कला के बारे में आप सीख पाएंगे। And then who would think we would start a painting business later on in life? You know what I mean? और क्या पता हम भविष्य में आगे जाके जो है पेंटिंग का व्यापार शुरू करें। Just a few things we picked it up, right? कुछ चीजें हमने वहाँ से सीख ली। Krishna knows past, present, and future. कृष्णा को अतीत, वर्तमान और भविष्य पता है। Yeah. So it's a problem with the qualification of the hearer, तो ये समस्या है श्रवणकर्ता की योग्यता के अंदर। because the bona fide guru, bona fide authorized guru, he's empowered and authorized from Krishna, so that problem is not from Krishna's side. तो प्रामाणिक अधिकारी गुरु कृष्ण का आदेश अधिकार मिला है, तो उनके तरफ से कोई समस्या नहीं है। The problem is from our side. तो समस्या हमारी तरफ Is से है। how eager and greedy we are for that information हम कितने उत्सुक लोग हैं उस जानकारी को पाने के लिए and wanting to absolutely know. और बिल्कुल उसको हम जानना ही चाहते हैं। Tattva Jigyasa, right? तत्व जिज्ञासा, Tattva Jigyasa. तत्व जिज्ञासा। Eager greediness to understand this tattvas. उत्सुकता, लोभ, What is को जानने absolute की truth? कि परम सत्य क्या है। And that's not the same in everybody. और ये सभी के अंदर एक समान नहीं होता है। Now, if you associate with people who are very enthusiastic, you can become enthusiastic if they can make you realize and understand the value of that subject matter. लेकिन अगर आप ऐसे उत्साही लोगों का संग करते हैं तो हो सकता है उनके माध्यम से आपको भी इस विषय के बारे में और ज़्यादा समझ प्राप्त हो पाएगी And how important it is for you. और ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। So if they see some value, yes, I really need this, I need to take advantage of this, then that may motivate them. तब आपको उसका मूल्य जब दिखने लगेगा तब आप समझ पाएंगे कि अब मुझे इस प्राप्त करने की ज़रूरत है, तब आप उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। Even though previously maybe they were not so enthusiastic. हो सकता है पहले वो उतने ज़्यादा उत्साह में नहीं थे। So if one doesn't have the qualification or hasn't performed enough pious activities, but if he has the right attitude for hearing, then he can get the full benefit of hearing. When you have a chakra chasing you, you're going to develop a really nice attitude to listen for some help, isn't it? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई योग्यता नहीं है लेकिन उसका भाव अच्छा है कि वो सुनना चाहता है तो क्या वो भी धीरे-धीरे सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है श्रवण के माध्यम से। तो गुरुदेव बता रहे जब आपके पीछे एक चक्र घूम रहा होगा तो आपका भाव बहुत जल्दी बदलने वाला है कि आप अच्छे से सुनना चाहते हैं। It's amazing. Durvasa Muni is getting chased by that chakra, isn't it? बहुत अद्भुत बात है, दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र भाग रहा है And while he's getting chased, no one could give him relief. और जब चक्र उनके पीछे भाग रहा था कोई उनको राहत नहीं दे पा रहा था। And it says while he was going everywhere to find relief, nobody would give him relief. He became very intelligent.
और बताया जा रहा था कि वो सभी के पास राहत पाने जा रहे थे, कोई उनको मदद नहीं कर पा रहा था, तब उनकी And बहुत they जल्दी became very humble. तो बहुत बुद्धिमान और विनम्र होने लगे। It's amazing, isn't it? इतनी अद्भुत बात है ना। So we're going to get humbled out, and we're going to develop a little better intelligence. Then we'll try to understand, okay, what is what. तब हम थोड़े ज़्यादा विनम्र जब हो जाएंगे और हमारी बुद्धि आएगी, तब हम समझ पाएंगे क्या क्या है। And the problem is the stakes are life and death. और समस्या ये है कि यहाँ खतरा जीवन और मृत्यु का है। We don't fully understand that. और इसको हम पूरी तरीके से समझ That नहीं we're पाएंगे। playing with life and death stakes. That's the scary part about it. हम जीवन और मृत्यु के साथ यहाँ खेल रहे हैं और ये उससे बहुत ही डरावनी बात है। We're thinking we have time, we have independence, we have varieties, we have a ability to work out our own process, come to our own conclusions. We're not understanding the life and death nature of the magnitude of the situation. हम सोच रहे हैं हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत स्वाधीन हैं, हम अलग-अलग प्रक्रिया को छानबीन कर सकते हैं, तो हम असल में इस जन्म और मृत्यु के इस डरावने पहलू को नहीं समझ पा रहे हैं। Just like children, जैसे छोटे they're बच्चे not able to possibly contemplate the danger in the world, right? जो इस जगत के खतरे को असल में वो भाप नहीं पाते हैं। It says there's danger at every single step. यहाँ बताया जाता है हर एक कदम पे यहाँ खतरा है। And then if we're deaf, dumb, and blind, और अगर हम अंधे गूंगे बहरे हैं, how much more is that danger there for us? तो हमारे लिए कितना और ज़्यादा खतरा है। And yet, we're like, okay, be Krishna conscious or not, what's the big deal, you know? और हम कह रहे हैं कृष्ण भावनाभरित होंगे या नहीं, क्या बड़ी बात है। I have time. मेरे पास समय है। So we're not understanding really the reality of the situation. तो हम असल में स्थिति की सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। And once we start getting heavy reactions, then we'll start to become more humbled out, more intelligent. और जब हमें बहुत भारी प्रतिक्रिया मिलने लगेगी, तब हम ज़्यादा विनम्र होने और ज़्यादा बुद्धिमान बनने लगेंगे। Right? Arjuna, he's thinking he can understand his problem and solve everything. अर्जुन सोच रहे थे वो अपनी सारी समस्या को समझ सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। And then when it's just getting worse and worse and worse, and he becoming weaker and weaker and weaker, cannot be successful materially or spiritually, then he said, okay, this isn't working. और जब परिस्थिति और ज़्यादा बदतर होने लगी और वो समझ पाए ना तो कुछ भौतिक काम कर रहा है ना आध्यात्मिक काम कर रहा है, तो वो समझ पाए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। This is not solving anything; it's making it worse. यहाँ कुछ समाधान नहीं हो रहा, समस्या और बड़ी So होती जा he रही है। came to that conclusion. तो वो अंतिम में इस निष्कर्ष तक पहुँच पाए। Then he surrendered. तब उन्होंने शरणागत Then he said, okay, Krishna, now I'm soul surrendered unto you. तब उन्होंने कहा कृष्ण आप मैं आपको आत्मसमर्पण करना Now you're my master. Now you're my spiritual अब master. आप मेरे मालिक हैं, मेरे गुरु Now हैं। you just tell me decisively, specifically, what should I do? अब आप मुझे निश्चित रूप से विशेष करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। Now, without understanding what is Guru Tattva and what is Parampara and what is Paramatma Tattva, then how will you understand where Krishna is going to give you the instruction? तो अगर आप गुरु तत्व, परमात्मा तत्व, परंपरा तत्व नहीं समझते, कैसे आपको पता चलेगा कि कृष्ण कहाँ से आपको बुद्धि देने वाले हैं? It's like you have this big mansion with 20 rooms, right? And you know, every room has a water tap, right? जैसे आपने एक बड़ा महल बनाया है, उसमें 20 कमरे हैं और हर कमरे में एक पानी का नल लगाया है। So you can run around in every room and try to open up the tap, see some kind of water is coming down. तो आप हर एक कमरे में भाग-भाग के हर एक नल को खोल के देखने का प्रयास करेंगे कौन से नल से पानी आता है। Or you can ask the engineer which tap, if any, is open. या फिर आप इंजीनियर से पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा नल चालू है। And they'll say, oh, in this room, that tap, I left that tap open. तो बताएंगे इस कमरे का ये नल मैंने ठीक रखा चालू So then you go there, the water's flowing down. तो वहाँ जाएंगे पानी वहाँ से बहता हुआ मिलेगा। So you can go around and just open up taps and see if some water comes. तो आप हो सकता है ऐसे घूमते रहेंगे और हर एक नल को खोल के देखेंगे कि उसमें से Or पानी you आ रहा है या can go नहीं। to the engineer, the source, and find out, okay, where is the water coming? या फिर आप इंजीनियर के पास जाके सीधे-सीधे पता लगाएंगे वो स्रोत कहाँ है जहाँ से पानी आ रहा What है। is that process to receive that benefit? वो प्रक्रिया कहाँ है जहाँ से मुझे वो लाभ मिलेगा। So what is our approach? What is our process? हमारी क्या प्रक्रिया है, हम किस तरीके से जाने का प्रयास कर रहे Are हैं। we just speculating? Are we just guessing? Are we just emotionally going about it? How you're feeling? What you're thinking and feeling? तो आप किस तरह अपने मनोधर्म के माध्यम से अंदाजा लगा के जाने का प्रयास करें कैसा आपको महसूस हो रहा है, आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं, इसके आधार पर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। I remember when I first started really seriously my spiritual
practice, and one person came up and said, you know, feelings are not facts. और मुझे याद है जब मैं भक्ति जीवन की शुरुआत कर रहा था उस समय मुझे और गंभीरता से प्रयास कर रहा था तो ये व्यक्ति ने मुझे आकर कहा आपकी भावनाएं सच्चाई नहीं And that was a very kind of a shocking revelation. और मुझे बहुत ही चौंकाने वाला सत्य प्रकाशित हुआ Because it made me to consider that you're basing your mentality and what you're thinking and doing off of your feelings. और इसने मुझे ये सोचने को मजबूर किया कि मैंने अपनी मानसिकता का आधार अपने अनुभूति के आधार पे अपनी भावनाओं के आधार पे बनाया Whether you feel like it, or you don't like it, you're basing your decision whether you'll do something or not based on feelings and emotion. कि आपको क्या चीजें पसंद है क्या नापसंद है उसके भावनाओं के आधार पे अपनी मानसिकता का आधार बनाया है And we're trained like that. और हमें प्रशिक्षण भी ऐसा ही मिला है This modern civilization, educational system is basing everything feelings and emotion. ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था सभी चीजों को भावनाओं और अनुभवों के आधार पे आधारित करना चाहती है And then the men are so weak, और पुरुष इतने कमजोर they're हैं so powerless, इतने शक्तिहीन हैं that the women just are becoming powerful. और जो स्त्रियां हैं शक्तिशाली हो जा रही हैं Right? You see many countries where the prime minister, the president is a woman. अब देखिए बहुत सारे देशों में जो प्रधानमंत्री हैं या So राष्ट्रपति हैं women वो by स्त्री nature are built to be emotional. और स्त्री को स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से It's not भावनात्मक good or बनाया गया bad, it's just a biological fact. ये अच्छा बुरा की बात नहीं है ये एक तरह का जैविक प्रक्रिया है Right? How do they raise their family and nurture their family without this type of emotional, intuitiveness? कैसे वो परिवार को आगे बढ़ाते हैं और फल फूल फलाते फूलते हैं तो उनका ये प्राकृतिक स्वभाव है Why are you smiling? हंस क्यों रहे Huh? Did he get it right? क्या उन्होंने सही बताया Did he get it right? क्या उन्होंने Did सही he बताया understand it? क्या उन्होंने सही तरीके So से why are you समझा? smiling? हंस I'm क्यों curious. रहे मैं जिज्ञासु हूँ थोड़ा The words which he used was What was the words? अल्लाह How does it translate his words? इन्होंने शब्द कैसे अनुवाद किया आप कैसे कर सकते हैं How do you translate it? I like you said nurture I said what? nurturing the family mother like the women Yeah. so I said I explained it like how the tree it like grows and like fructifies Wow, he's speculating now. ये मनोधर्म कर रहे हैं Krishna just exposed him. कृष्णा ने इनका सत्य बाहर निकाल दिया Right? It's supposed to be as it is, होना man. चाहिए यथारूप होना This चाहिए guy's starting to be like more than the guru, you know? अरे ये व्यक्ति जो गुरु से भी आगे जा रहा है I mean, I know I'm a little rough, you know? मुझे पता है मैं थोड़ा Like I'm rough and he's talking about trees and flowers and, maybe that's easier for you to understand, I don't know. ये गुरु रफ है तो ये मैं थोड़ा पेड़ Maybe पौधों के that's बारे में बात Krishna's arrangement. हो सकता है यही कृष्ण की व्यवस्था है Maybe he's softening me, I'm sounding softer to you. तो हो सकता है उनके माध्यम से कि मैं थोड़ा नरम लग रहा हूँ Or maybe he's influenced by, feelings and emotions. या हो सकता है ये भावनाओं से और अनुभवों से प्रभावित हो रहे हैं Let's Krishna say, तो ये कृष्ण बता रहे हैं Wow, I was wondering why it was always taking him so long to translate my words. Now I understand, मुझे समझ में आया ये मेरे बातों को अनुवाद करने में इतना समय क्यों लगाते हैं आप मुझे समझ में आया This guy's, he needs a podcast, इसको जो है पॉडकास्ट में डालने की जरूरत है I said like a few words, it's like going on and on. Like, wow. मैं कुछ शब्द कहता हूँ और ये आगे बढ़ाता रहता है Trees and houses in the sky, पेड़ फूल इसके बारे में बता रहे हैं discussing everyone's psychophysical nature. सभी के मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं Sometimes I'll say something in Russia and then it'll be translated, and then I look at everyone's reaction, I'm like, that reaction does not fit what I just said. कभी-कभी मैं क्लास देता हूँ और रूसी में अनुवाद किया जाता है और सभी का जो प्रतिक्रिया है देखने में लगता है कि मैंने जैसा बोला ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिलनी चाहिए It doesn't match. ये मेल नहीं खा रहा मेरे बातों से I should not get that kind of reaction on मुझे that statement. इस मेरे वाक्यों से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए And then I'd ask them, what did you just translate to them? और मैं उनको पूछता हूँ आपने क्या अनुवाद किया इन लोगों And then they just say something. फिर वो कुछ बात कह देते हैं Sometimes more in the beginning, they just say some other thing.
और कभी-कभी वो जो कुछ अलग ही बात कहते हैं। And I said, no, I'd not say like that. मैं कहता हूँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। Then I say like this. और फिर मैं कहता हूँ मैं ऐसा कह रहा Now हूँ। translate that. अब इसको अनुवाद करो। And then they translate that, and then I see the reaction is exactly what you would expect for that statement. और फिर वो उसे अनुवाद करते हैं और बिल्कुल वैसा ही मुझे प्रतिफल मिलता है जैसा उसके आधार पर मिलना चाहिए था। So I could, Krishna helping me to understand by everybody's तो reaction. कृष्णा मेरी मदद करते हैं सभी लोगों का रिएक्शन देखकर। What is your mind accepting and not accepting? क्या उनका मन स्वीकार कर पा रहा है, क्या स्वीकार नहीं कर पा रहा। Otherwise, how can the guru help you if he doesn't understand all of वरना that? गुरु कैसे आपकी मदद कर पाएगा अगर ये सारी बातें समझ ना पा रहा हो। Any other thing? कोई अन्य बात? It's awful cold over there, isn't it? काफी ठंडी लग रही है वहाँ, है ना? Not bad? बुरा नहीं It है। woke you up. You were getting sleepy, you know? आप जगें, आप थोड़ी नींद में। Sometimes the cold air is like a slap in the face, you know? कभी-कभी ठंडी हवा मुंह पे थप्पड़ की तरह लगती है। Any last thing? कोई आखिरी चीज? Do you like this topic? Does it help you? क्या आपको Really? असल में? All right. ठीक है। He's asking what is Vani Seva and what is Vapu Seva? Wani. Wani? Wani and Wapu. Wani and Wapu. Sounds like a sitcom, you know? Wani and Wapu, you know? Vani Vapu क्या है? Wani and Wapu go to the water. Waiting in the water. I'm sorry. Sometimes something just strikes me really funny, you know? कभी-कभी मेरे दिमाग में कुछ बहुत ही मजाकिया बात आ जाती है। I don't mean any harm, man. मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। My Italian friend. You know? मेरे इटालियन दोस्त We're all laughing together. We're laughing साथ together. में हंस रहे हैं, साथ में हंस रहे हैं। Dave is still smiling. He's like the barometer, you know? वो हमारा जो है मीटर है। Yeah. If he's happy, he's going to be happy. खुश है, ये भी खुश रहेगा। As soon as he goes off, he's getting worried. You know? जैसे वो भटकने लगता है ये चाहिए। And then when I see he's not happy, I immediately look at Dave. मैं देखता हूँ ये खुश नहीं है, मैं तुरंत उनको देखता हूँ। I'm tying the two. बांध के रखता हूँ। And I'm worried about the cookie outcome also. और साथ में मुझे ये भी चिंता है कुकी आने वाला है या नहीं। That's another risk. You ये know? बहुत बड़ा खतरा है। So, Wani and Wapu. वानी और वापू। So, on a serious note, तो अगर गंभीरता से कहें, if we don't associate personally with the spiritual master, how will Krishna show us that that person is the spiritual master? तो अगर हम व्यक्तिगत संग नहीं करेंगे आध्यात्मिक गुरु का, तो कैसे हमें कृष्ण दिखाएंगे कि वही है वो आध्यात्मिक गुरु? So when I met my spiritual master, many wonderful things happened, but I still don't know that he's my spiritual master. तो मैं अपने जब आध्यात्मिक गुरु से मिला तो बहुत ही अद्भुत चीजें हुई, लेकिन तब भी मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु Because हैं, I wasn't really looking for a spiritual कि master. मैं गुरु को ढूंढ ही नहीं रहा था। But then I asked Krishna, is you made this arrangement? He's my spiritual master? लेकिन मैंने कृष्ण से पूछा कि आपने ये व्यवस्था बनाई है, क्या ये मेरे गुरु हैं? Should I accept it like this? क्या मुझे इनको स्वीकार करना चाहिए इस So तरीके can से? you please give me like 108% understanding that this is your arrangement and that I should accept this person as my spiritual master? तो क्या 108% मुझे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या मुझे इस व्यक्ति को आपके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए? And then Gurudev spoke in such a way, and that was confirmed from Krishna within, who gave me intelligence and faith to understand. He cannot speak like that unless it's actually a fact. और फिर उन्होंने इस तरीके से बात करना शुरू किया और भीतर से भी मुझे ये बुद्धि और श्रद्धा मिली कृष्णा से, अगर ये कृष्णा के प्रमाणिक प्रतिनिधि नहीं है तो इस तरीके से बात नहीं कर सकते। So we want to develop relationship with the spiritual master. That's a personal association. तो गुरु के साथ व्यक्तिगत संग में आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं।
And then those instructions from Krishna is coming through the spiritual master. और ये निर्देश असल में कृष्ण के गुरु के माध्यम से प्राप्त So होते the हैं। first most important instruction is to do this vapu and do this hearing and hearing, shravanam, in the association of bona fide guru. तो सबसे पहली प्रमुख सेवा ये वापु सेवा प्रमाणिक गुरु के पास जाकर श्रवण करना And then get the effects and benefits of that hearing. और उनके श्रवण के माध्यम से Purification of consciousness, चेतना का शुद्धिकरण, transcendental knowledge and proper understanding, दिव्य ज्ञान, सही समझ प्राप्त करना, of faith, श्रद्धा, right? All these benefits will come by that personal association and hearing. ये सारे लाभ प्रभाव उनके व्यक्तिगत संग में प्राप्त होंगे। And then Krishna will give us those instructions through, as Prabhupada said tonight, through pure by a medium of the spiritual master. और कृष्ण हमें ये सारे निर्देश देंगे जैसा प्रभुपाद ने आज के श्लोक में बताया उस शुद्ध माध्यम से। If we don't want to know absolutely what Krishna wants us to do and we're not prepared to execute it, you don't need a spiritual master. तो अगर हम बिल्कुल गंभीरता से जानना नहीं चाहते कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं और हम उसको करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको गुरु की कोई जरूरत Then नहीं you just act as your own spiritual तो master. आप खुद के गुरु के रूप में कार्य करेंगे। Or you go around collecting opinions या फिर आप घूमते हुए लोगों के सुझाव इकट्ठा and करेंगे you're making a sadhu soup. और फिर साधु का सूप बनाएंगे। I'm collecting opinions. मैं सुझाव जमा करता हूँ। It's like you go to, on the festival in Mayapur, right? And you go up to all the gurus and say, I'm taking a survey. जैसे आप जो है मायापुर में महोत्सव होता है यहाँ अनेक गुरुओं के पास जाके आप उनसे सर्वे इकट्ठा कर रहे हैं। What do you think Krishna wants me to do? आपको क्या लगता है कृष्ण मुझसे क्या चाहता है? You just go to every guru, every sadhu and say, what do you think Krishna wants me to do? हर एक गुरु साधु के पास जाके पूछ रहे हैं कि कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं? You're with Krishna, you're a devotee of Krishna, you're parampara, you're a guru. What does Krishna want me to do? आप कृष्ण के साथ हैं, आप परंपरा हैं, आप गुरु हैं, आप बताइए मुझे कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं? So if they're all pure via mediums of Krishna, wouldn't they be saying exactly the same thing? अगर क्या वो सभी कृष्ण के शुद्ध माध्यम है तो क्या वो सभी एक ही बातें नहीं कहेंगे? So how you'll just put faith in the instruction? तो कैसे आप उनके निर्देशों में श्रद्धा रख पाएंगे? Right? The instruction came through the guru. तो ये जो निर्देश हैं गुरु से प्राप्त होते हैं। So that instruction and the guru is the same. It's inextricably linked. You cannot separate the instruction from the medium of the guru. तो गुरु और गुरु के निर्देश बिल्कुल एक समान होते हैं। आप गुरु और जो माध्यम है और उस निर्देश को अलग नहीं कर सकते हैं। Because that's where you heard it from. क्योंकि उन्हीं से आपने वो निर्देश So प्राप्त every किया। time you hear that instruction, you'll think of the form of the guru that Krishna delivered that instruction to you. तो जब भी आप उस निर्देश के बारे में सोचेंगे आपको उस रूप का याद स्मरण होगा जिसके माध्यम से आपको वो निर्देश प्राप्त हुआ है। And Prabhupada said in the purport, तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया while working in that way, one should think of Krishna only. तो इस तरीके से कार्य करते समय केवल कृष्ण का चिंतन होना I चाहिए। have been appointed by Krishna to discharge this particular duty or service. मुझे कृष्ण ने नियुक्त किया है इस विशेष सेवा या कर्तव्य को पूरा करने के लिए। And while acting in such a way, one naturally has to think about Krishna. और इस तरीके से कार्य करते हुए किसी को स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन होगा। This is perfect Krishna consciousness. यही है पूर्ण कृष्ण भावना में। So when we met the spiritual master, we understand his pure by medium of Krishna. We didn't say, what do you want me to do? तो जब हम ये सब देख पाते हैं कि कृष्ण गुरु जो है कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि हम ये गुरु से नहीं पूछते आप मुझसे क्या चाहते हैं? The instruction is, what does Krishna want me to do? निर्देश ये होता है कि कृष्ण मुझसे क्या The चाहते हैं? question is, what does Krishna want me to do? सवाल ये है कि कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं? And bona fide spiritual master, it is said that he knows Krishna's intention for you. और बताया जाता है कि प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु कृष्ण का उद्देश्य आपके प्रति क्या है वो जानता Because है। he's depending on Krishna's intelligence and faith to guide you. क्योंकि वो कृष्ण के श्रद्धा और बुद्धि के ऊपर निर्भर है आपको मार्गदर्शन करने के लिए। That's how he knows. इस तरीके से वो जान पाते हैं। Is it making more sense? क्या आप ज्यादा समझ पाए और? We didn't come here for a guru. हम यहाँ गुरु के लिए नहीं आए, We came here for Krishna. हम यहाँ कृष्ण के लिए आए। When you came to the temple the first day with your book in your hand and you rang the bell and knocked on the door, you're going there to learn how to understand about God, about Krishna, how to serve Krishna. जब आप पहली बार आए मंदिर में अपने हाथ में किताब लेकर मंदिर की घंटी बजाते हुए
ये जानने के लिए कि कैसे मैं कृष्ण को जान सकता हूँ, कृष्ण की We're all सेवा कैसे eternal कर सकता हूँ। servants of Krishna. हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। That's the that is what is Sanatan Dharma. ये है सनातन धर्म। And then we're asking Krishna, how can I serve you? और हम कृष्ण से पूछ रहे हैं कि कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। Then we're not so able to hear Krishna. और हम कृष्ण को सुनने के योग्य नहीं हो पा रहे हैं। So then we're like, well, why is Krishna not telling तो me? हम सोच रहे हैं कृष्ण मुझे बता क्यों नहीं रहे। And Krishna is telling, but we can't hear it. और कृष्ण हमें बता रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे And he knows that we cannot hear it. हैं। और उनको पता है कि हम सुन नहीं So he सकते। said, okay, just go to this person and I'll speak through him so that you can hear it. तो फिर वो हमें बताते हैं आप उस व्यक्ति के पास जाइए क्योंकि आप उनके माध्यम से मुझे सुन पाएंगे। So we're getting hung up, is he a guru, is he bona fide guru, is he a bona fide, we're getting hung up like who's a guru. हम फंस रहे हैं ये पता लगा क्या ये है गुरु वो है गुरु, हम ये पता लगाने में फंस रहे हैं। And meanwhile, we're not eagerly, praying to Krishna, how can I know what you want me to do? और उस समय हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कृष्ण से कि कृष्ण आप मुझसे क्या चाहते हैं। What is my order? What is my instruction? What is my duty? मेरा आदेश, मेरा निर्देश, मेरा कर्तव्य क्या है? That should more be our focus. वो हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। Then it's up to Krishna to make a situation where you can get faith and intelligence through bona fide guru. तो अब आप कृष्ण के हाथ में आपके लिए ऐसी स्थिति बनाए जहाँ पे आपको बुद्धि मिले, श्रद्धा मिले, कौन है प्रमाणिक गुरु। So we're not even sure we want to fully surrender to Krishna. हम खुद ही सुनिश्चित नहीं है कि कृष्ण को पूर्ण शरणागत करना We're चाहते just हैं like, या नहीं। I'm thinking about doing that. और हम भी कह रहे हैं हम इसके बारे में करने का सोच And रहे it's हैं। like, I wonder what Krishna would ask me to do. और मैं सोच रहा हूँ कृष्ण मुझे क्या करने के लिए करें। And, I'm wondering if I would even do it. और मैं सोच रहा हूँ क्या मैं उसको करूँगा भी या नहीं। So then with that mentality, you're gonna like try to figure out who's a guru? इस मानसिकता से आप ये पता लगाने जा रहे हैं कौन है गुरु। That's why I said that one of the most difficult tattvas to understand is Guru Tattva. इसलिए कहते हैं जो सबसे कठिन तत्व है समझने के लिए गुरु तत्व। Shiva Tattva and Guru Tattva. शिव तत्व और गुरु तत्व। Because it's literally directly Krishna manifesting. कि असल में ये सीधे सीधे कृष्ण वहाँ प्रकट हो रहे हैं। Sakshat Rupena Samasta Shastra, that the Guru is as good as Krishna. गुरु कृष्ण के समान है। Of course, the Guru never says he's Krishna, अवश्य गुरु कभी ये नहीं कहते वो कृष्ण है। but he knows that Krishna is using his devotee to be a mouthpiece. लेकिन उनको ये पता है कि कृष्ण अपने भक्त का इस्तेमाल करते हैं उनके मुख से के माध्यम से बात करते हैं। So he's just allowing Krishna to use the body to give Krishna's instruction. तो वो कृष्ण को अनुमति दे रहे हैं उनके शरीर का इस्तेमाल करने के लिए कृष्ण के निर्देश को लोगों तक देने के लिए। So to be able to realize that is no small thing. तो इसका साक्षात्कार करना कोई आसान कोई छोटी मोटी बात नहीं है। Oh, 6 months devotee, with deaf, dumb, and blind. Hey, pick a spiritual master. हम 6 महीने आए हुए हैं वो हैं और मंदी को बहरे और कहा जा रहा है कि आपको आध्यात्मिक गुरु चुनना You चाहिए। need a guru. आपको If you're going to live here, you need a guru. अगर आपको यहाँ रहना आपको गुरु Wow, okay. I came here for Krishna, but now I need a guru. मैं आया हूँ कृष्ण के लिए लेकिन अब मुझे गुरु चुनना है। Well, who's the guru? तो गुरु कौन है? And they said, well, these two or these three. तो कहते हैं ये दोनों या ये 3 गुरु हैं। Right? Even what someone was telling us in Pune, that what was it? Radhanath Swami and his disciple, Radhesham Prabhu. That you only can hear from Yes. that one Maharaj. They have the syllabus, only hear from these people. So they're saying you can only hear from one guru or his fanatical followers. I mean his disciples. तो जब हम वहाँ गए थे पुणे में वहाँ बताया गया केवल आप इसी गुरु से और उनके पागल जो शिष्य हैं इनसे सुन सकते हैं। Sometimes slips out, कभी-कभी ये फिसल के बाहर आ जाता है। So it says, Krishna can use one Diksha Guru and unlimited Shiksha Guru. तो कृष्णा एक दीक्षा गुरु और अनेक शिक्षा गुरु को चुन सकते हैं। But in Pune, Krishna is limited. लेकिन पुणे में कृष्णा सीमित है। There's something about that atmosphere. वहाँ के परिवेश में कुछ अलग It है। is so strong that Krishna could only come in there, like squeeze in there through this one person and a couple of fanatical followers, कि वो वहाँ
वहाँ He's इतना restricted otherwise, you know. वो जगह ऐसे परिवेश ऐसा कृष्ण बहुत सीमित है एकदम उनको किसी तरह से घुस के उस एक व्यक्ति गुरु के और उनके शिष्यों के माध्यम से ही केवल बोल सकते हैं He can manifest unlimited universes, but he's having trouble with Pune. You know? वो अनेकों ब्रह्मांड में अनेक रूप से अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं लेकिन पुणे में उनको बहुत समस्या हो रही है Does this make any sense? क्या इसका कोई अर्थ बनता I है mean, we got to use our brain here, you know, like use some common sense हमें here. अपना सामान्य ज्ञान थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए This is all politics. ये सब राजनीति है This is all like literally brainwashing. ये सब जो ब्रेन वॉशिंग This is a, you know, when they criticize it's a cult, that's a cult. जब वो कहते हैं जो किसी तरह की पंथ की बुराई करते हैं असल में वही पंथ है Literally, that's a cult. वही असल में पंथ है That's exactly what they're. That's exactly what my mother said. Don't join that movement. It's a cult. मेरी माँ ने भी यही कहा था इस आंदोलन से जुड़ना मत ये एक तरह का पंथ है I remember when the devotees would go by with the Hari-katha or the Rath-yatra, right? I was so curious to know what's in the books because I used to love reading books. और मैं बहुत इतना जिज्ञासु होता था जब मैं देखता था रथ यात्रा या पद यात्रा भक्तों की गुजर रही हो तो उनके पास जो किताबें होती थी मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी इन किताबों में क्या लिखा है And I would like sit up on the hill and I would look down on the festival and I saw they had so many books on the book table. और मैं ऊंचाई में जाके देखता था कि इनका ये महोत्सव हो रहा है और उनके पास टेबल पे बहुत सारी किताबें रखी हैं And I was so curious, like, what's in these books, you know? और मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा होती थी इनकी किताबों में Why क्या is लिखा है everybody reacting like this? सभी लोग ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं इनके प्रति Same with like Scientology or some other thing. I was so curious, like, what is their philosophy? तो इसी तरह से साइंटोलॉजी इस तरह के चीज सिद्धांत के ऊपर मेरी बहुत जिज्ञासा रहती थी So my curiosity was so strong, and I remember my mother's like, "Oh, this is a cult. You have to be careful. This is very dangerous." Right? We were warned. और मेरी जिज्ञासा इतनी मजबूत थी लेकिन मेरी माँ कहती थी एक तरह का पंथ है ये बहुत खतरनाक है तुमको सावधान रहना चाहिए इस तरीके से हमें चेतावनी दी जाती थी Because it was so different. क्योंकि ये बहुत ही अलग था देखने I remember I was 8 years old. My mother took me to the city to buy some school clothes. और मुझे याद है मैं 8 साल का था मेरी माँ मुझे शहर में लेकर गई कुछ स्कूल के कपड़े खरीदने के So लिए that would have been in 1969. तो ये 1969 की बात है And I remember coming up the escalator from the subway. और मुझे याद है मैं सीढ़ी से ऊपर आ रहा था सबवे से And when I came up onto to the ground और जब हम outside, सतह पर आए बाहर में there was like 50-60 devotees doing Harinam. और वहाँ पे 50-60 भक्त हरिनाम कर रहे थे And the men, ladies, everyone was wearing saffron. और महिला और पुरुष सभी लोग सैफ्रॉन कपड़े पहने And all the men, everyone had a shaved bald head, you know. और सभी जो पुरुष थे सभी के सर मुड़ाए हुए थे And they had a tilak. तिलक लगाया था They're wearing all different, saris and different dhotis. Right? We never saw any dress like that before. सभी लोगों ने अलग साड़ियाँ और धोती पहना हुआ था मैंने इस तरह के कपड़े पहले कभी देखे We नहीं थे never saw any bald people, और कभी ऐसे like so many. इतने सारे जो है सिर मुड़ाए लोगों को मैंने एक Like साथ once in एक a while you जगह see नहीं one old man, but like so many bald people. कभी कोई एक बूढ़ा आदमी गंजा आदमी दिख जाता है लेकिन इतने सारे जो एक साथ दिख जाए सभी के सर मुड़ाए The हुए sunlight is like bouncing off of their head, और सूरज का रोशनी जब उनके सर से टकरा रहा हो तो टक्कर मार के and नीचे they're चला chanting जाता है। like this ecstatic kirtan, और वो पूरे भाव में पूरा कीर्तन कर रहे हैं And I'm just like 8-year-old boy, मैं बस 8 साल का बच्चा था So when I came up, I was like, wow, like what's happening here, जब मैं बाहर आया देखा ये क्या हो रहा है यहाँ This was like so like amazing sight, ये इतना अद्भुत दृश्य था मेरे लिए Playing mridangas and kartals, right? This was like another planet. तो मृदंगा करताल बजा रहे थे ऐसा लगा ये अलग ही हम ग्रह में आ चुके हैं Then my mother just grabbed me. She's like, let's go, and she like pulled me out of there, और मेरी माँ मुझे खींच कर लेकर गई कहीं चलो हम यहाँ से चलते हैं Because my mother was very like a mama bear, क्योंकि मेरी माँ जो है एक बहुत ही सख्त महिला She थी was very protective. बहुत मेरी हमेशा मुझे बचा के रखना चाहती थी So she just took me out of तो there. मुझे वहाँ से खींच के ले गई Well, how did we get onto that topic? हम इस विषय तक कैसे पहुँचे Pune, having trouble in Pune. Oh, so what happened was, so we were told like this is dangerous. तो क्या वो हमें बताया गया था ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं Something bad will happen to you. आपके साथ कुछ बुरा होगा यहाँ So it created some kind of a fear.
तो हमारे अंदर एक तरह का भय रहता था। And it was never presented like this is Vedic culture, you know, from tens of thousands and hundreds of thousands of years ago. They just presented it like it's some brand new, manufactured kind of dangerous cult that was just organically just came out of nowhere. तो हमें इस तरीके से नहीं पता चलता था कि वैदिक संस्कृति हजारों सैकड़ों सालों से इसको पालन किया जा रहा है। हमें ऐसा पता चलता था ये बिल्कुल किसी नए तरह का पंथ है, बहुत ही खतरनाक है, हमें इसे सावधान रहने की जरूरत है। Sometimes you get these like so-called gurus, and they just take like a little bit from here and there, and they just make like a mishmash, you know, like some big concoction, you know. जैसे कुछ गुरु हैं, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेकर आकर एक साथ जोड़ के कुछ बिल्कुल ही गलत चीजें प्रस्तुत करते हैं। And then mostly it's like a personality cult worship. और ऐसा दिखाते हैं किसी एक व्यक्तिगत पंथ और पूजा की So they're saying they're Bhagavan, they're God. तो वो कहते हैं ये भगवान They're है, Yahweh, they're Jesus, they're the Messiah, you know. ये जीसस है, ये मसीहा है। So we were raised to be very afraid of this type of thing. तो हम जब पले पढ़े तो हमें इस तरह की चीजों से बहुत डराया Because it was so foreign. क्योंकि ये बहुत ही विदेशी लगता था। But because I was interested in philosophy and spirituality, I was so curious, like what's in their books. और मुझे दर्शन में और अध्यात्म में बहुत रुचि थी, तो मुझे उनकी किताबें बहुत दिलचस्प लगती थी। And I remember like walking down the hill because I was on my lunch break और मुझे याद है at the office. मैं पहाड़ से नीचे आ रहा था और हमारे लंच का समय था ऑफिस के। And then I picked up a couple of books. I think one of them was, it could have been Srimad Bhagavatam. और मुझे याद है मैंने कुछ किताबें ली थी, मुझे ऐसा लग And रहा Science of था Self-Realization. और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। Then I went back, I started reading them, like, wow, this is unbelievable information. और मैं वापस गया, मैंने उसको पढ़ने लगा, मुझे लगा ये तो बहुत ही अद्भुत बात जानकारी दी गई है। And then just said my whole life changed after that. और उसके बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। Because these books are you know, non-different from the Lord. क्योंकि ये किताबें भगवान से अभिन्न हैं। So a lot of times our fear, our anxiety, our misunderstanding, you know, all of this comes into play where we're not able to fully trust Krishna to protect us, and so therefore we feel like, okay, I have to protect myself. ये सारी बहुत सारी भय चिंताएं हमारे अंदर आती है क्योंकि हम कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं करते हमारे रक्षण के लिए, तो ये भय और चिंता हमारे ऊपर आ जाती है। And at a certain point I started to realize that what we're looking for is so beyond our understanding and experience. There's some level of like blind faith or trust towards Krishna is actually required. तो अंत में मुझे किसी तरह ये समझ में आया कि ये हमारे समझ क्षमता से कहीं ज़्यादा परे है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अंधविश्वास कृष्ण के प्रति होना जरूरी है। That's why Prabhupada said, I'm not telling you to trust me, I'm telling you to trust Krishna. इसलिए प्रभुपाद भी कई बार कहते थे मैं आपको ये नहीं कह रहा मुझ पे विश्वास कीजिए, आप कृष्ण में So विश्वास if you कीजिए। keep saying to Krishna, Krishna, I want to know specifically what you want me to do. I want to serve you, and whatever you want me to do, please just tell me that. Then how can anything bad happen to you? तो अगर आप बहुत गंभीरता से निष्ठा से कृष्ण को ये कहने का प्रयास करें, मैं आपको शरणागत करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, मुझे बताइए विशेष करके निश्चित रूप से, तो इसमें क्या बुरा होगा आपके साथ? So if we're right and we're you know faithful and we really want to surrender to serve Krishna, then why should we be fearful? तो अगर हम सही हैं, हम श्रद्धावान हैं, असल में कृष्ण को शरणागत सेवा करना चाहते हैं, तो हमें इतना भयभीत होने की क्यों जरूरत है? And if something isn't exactly right, Krishna will show us. तो अगर कुछ असल में सही नहीं है, तो कृष्ण And हमें दिखाएंगे। he'll make some adjustment, teach us some lesson, and make some adjustment in the process. तो वो कुछ व्यवस्था करेंगे और हमारे इस रास्ते में हमें मदद करेंगे। So what are we fearing? तो हमें भय क्यों है? As soon as this fear and anxiety comes, we have to protect ourselves. It means we're not trusting Krishna. तो जैसे ही हमारे अंदर ये भय चिंता आती है, मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत है, इसका मतलब कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। Where's all the lights? What happened to the lights? सारी लाइट्स कहाँ चली गई? क्या हुआ? सारी Inverter लाइट्स is almost, Huh? inverter battery is almost getting over now. I'm just getting started. My battery is getting stronger. इन्वर्टर की बैटरी खत्म होने वाली है, मुझे बता गया है हमारी बैटरी तो अभी शुरू हो रही है। The more I preach, the stronger I get. You notice जितना that? ज़्यादा मैं प्रचार करता हूँ, उतना ज़्यादा मैं शक्तिशाली होता जाता हूँ। That's why everyone's like, oh God, this could go like all night, you know? तभी लोग सोचते हैं ये तो पूरी रात चलने वाला है। Good thing I took a nap today, you know? अच्छा हुआ मैंने आज दिन में थोड़ा Maharaj आराम किया could था। like really
keep talking, you know, एकदम जो है because it's like a relief, कि एक तरह की बहुत बड़ी राहत है ये, right? There's so much other nonsense going on, you know, even in religious institutions. धार्मिक संस्था के अंदर भी इतनी सारी फालतू चीजें हो रही हैं, So many subject matters always around Guru Tattva, right? इतने सारे विषय हमेशा गुरु तत्व की इधर उधर होते हैं, Guru Tattva and money, गुरु तत्व, पैसा, शक्ति, power politics. शक्ति की राजनीति, How many zones are you responsible for? कितने जोन का जिम्मेदारी आपके ऊपर How है, many disciples do you have? कितने ज्यादा शिष्य हैं आपके, How many temples have you built? कितना मंदिर आपने बनवाया, Right? How many shlokas have you memorized? कितना श्लोक आपने याद करके रखा है, You know how nicely you can bend your body and do pranayam now. That's a new benefit you have to have. कितना अच्छा शरीर मोड़ के आप प्राणायाम कर सकते हैं. Yeah, when I come for India immigration, they say, why you're here? I said, I'm a yoga teacher. And they look at me like, you're a yoga teacher? जब मैं भारत में आया यहाँ What पे kind of पूछा yoga गया, are you doing? You know? आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं योगा टीचर हूँ. I'm like, oh, we eat pizza and, you know, आप किस तरह का योगा it's करते part हैं? of our religious practice. You know, we eat a lot of potatoes, a lot of pizza, a lot of rice, कहते हैं हम बहुत सारा आलू पिज्जा खाते हैं, chapatis, cheese. राइस खाते हैं, चपाती खाते And हैं. the guy's looking at me. I never heard of a yoga like this before. You know? कहते हैं इस तरह का योग तो मैंने कभी सुना नहीं And पहले. I tell him, it's really fun. You know, you should try it. You know. मैं कहता बहुत मजेदार है, आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए. And the guy's like, all right, you know, go ahead, you know. और फिर वो कहते हैं ठीक है. I do it on purpose now. If they ask me, I'm a yoga teacher. I'm like, मैं तब जानबूझ के करता. जब मुझसे पूछते हैं आप कौन क्या करते हैं, मैं कहता मैं योगा टीचर हूँ. really? कहते हैं असल में है आप योगा टीचर. What kind of yoga are you doing? कौन सा योगा करते हैं आप? It's called bhakti. मैं कहता हूँ भक्ति. I remember one time we were in the airport, we were distributing books, we tried to take a lunch, you know, and we said, okay, it's so crazy in the airport, let's go they had one like temple room. Nobody was in there. तो हम जब एयरपोर्ट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हमें लंच लेना था, तो हम सोच रहे थे यहाँ तो बहुत से कुछ हो रहा है, हम जाके कहीं टेंपल रूम जैसे जगह थी वहाँ जाके हम प्रसाद देने का हमने सोचा. So we're kind of like sitting on the altar, you know, तो हम वहाँ जाके जब and we ऑर्डर पे start बैठे opening all these containers of prasadam, you know, और सभी अपने अपने बक्से प्रसाद के बक्से खोले and it's like a huge feast, you know. और बहुत बड़ा हमने फीस And like 4 of us, and we're all just like, we have all these open containers and so many plates and so many preparations, you know. हम 4 लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के जो हमने तैयारी प्रसाद And we बनाया. start eating the prasadam, and then we start laughing and joking around. हम सारे प्रसाद खाना शुरू किया, हंसी मजाक करना शुरू किया. And these people are coming in to like pray before they get on the plane, you know. और कुछ लोग वहाँ पे आए प्रार्थना करने के लिए कि And विमान में we're up चढ़ने there से like, पहले. "Oh, Krishna." और मंदिर में कृष्णा. And then like their mind is like blown, you know, like how you're doing like this in the temple, you और know. उनका दिमाग ही पूरा खराब हो गया कि मंदिर में आप ऐसा कैसे कर रहे हैं. And I said, well, this is our religion. और हमने कहा यही हमारा ऐसा ही धर्म है. This is like what we do. हम यही करते हैं. We talk philosophy and we eat spiritual food. हम दर्शन के बारे में बात करते हैं और ये And आध्यात्मिक you can प्रसाद see है. we're very happy. और आप देखिए हम कितने खुश हैं. And so don't worry about your flight, you know. आप अपने विमान की चिंता मत कीजिए. God will protect you. भगवान आपको बचाएंगे. And they get furious and they like run out of the temple, you वो know. हमसे गुस्सा होकर जब मंदिर से बाहर चले जाते हैं. Because it's supposed to be for praying, you know. तो क्योंकि वो प्रार्थना करने की जगह होनी I चाहिए. said, we're praying. हम We कह रहे हैं need mercy. हम प्रार्थना कर रहे हैं. That's हमें why कृपा we're की eating this जरूरत है. prasad. इसलिए हम ये प्रसाद खा रहे हैं. Trying to purify our हम अपनी consciousness. चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं. Mataji, all right? माता जी ठीक है. You see how powerful our satsanga. अब देखिए असत्संग कितना शक्तिशाली है. That's why I say you develop some little faith, then you have to protect your faith. इसलिए मैं कहता हूँ आप अगर थोड़ा श्रद्धा पाइए, अपनी श्रद्धा को बचाने की जरूरत है. Because it's called, I don't understand topic asatsanga. huh? I don't understand topic asatsanga. I don't understand. I don't understand this topic, Asatsanga. Asatsanga? Asatsanga means bodily consciousness, mental speculation platform.
तो माता जी पूछ रहे मुझे ये शब्द असत्संग पता नहीं है, तो गुरुदेव बता रहे हैं ये शारीरिक स्तर, मनोधर्म का स्तर, ये है सत्संग। Not under guidance and control of Krishna parampara. तो कृष्ण परंपरा के मार्गदर्शन में नहीं, They're just acting whimsically, separate from that. मन की इच्छा से उससे अलग होकर कुछ भी करना, That's another type of Maya, platform of Maya. ये एक और तरह का माया का स्तर है। Anytime you go on bodily platform, emotional, sentimental platform, that's three-dimensional platform. That's a Maya platform. कभी भी आप शरीर के स्तर पे, मानसिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, ये सब माया का स्तर है, भौतिक स्तर है। That's Asat Sangha platform. वो है असत्संग का स्तर। So if we're attached to the body, bodily relations, our association is materialistic. तो अगर आप That's Asat Sangha. शरीर से शरीर के संबंधों के प्रति आसक्त हैं, तो हमारा ये जो संग है ये असत्संग है। If they're not speaking according to Guru Sadhana Shastra, अगर वो गुरु साधु शास्त्र के आधार पे बात नहीं they कर रहे don't understand what are those, what are the tattvas, what is the science of Krishna consciousness, just presenting it theoretically or academically or institutionally, this is also Asat Sangha. वो तत्वों को नहीं समझ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, वो केवल मौखिक स्तर पे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। If they're accepting gurus who are not bona fide authorized gurus in parampara, that's Asat Sangha. अगर वो ऐसे गुरुओं को स्वीकार करें जो प्रमाणिक अधिकारी गुरु नहीं है गुरु परंपरा में, वो भी असत्संग है। That's another type of cheating from Maya. ये एक और तरह का माया का ठगी है। Does that make sense? क्या आप समझ पाए? Now, unless you depend on Krishna, how are you going to know what is satsanga and what is asatsanga? जब तक आप कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, कैसे आप समझ पाएंगे क्या सत्संग है और क्या सत्संग है? Because the asatsanga is saying they're satsanga. क्योंकि असत्संग ये कह रहा है कि वो सत्संग है, And the satsanga, right, is saying they're asatsanga. और जो सत्संग है उसको वो लोग कह रहे हैं वो सत्संग है। So Maya is making what is true, she's making you think it's not true. तो जो असली है माया उसको कह रही है वो नकली है, And what is real is unreal. और जो नकली है वो असली, Unreal is real. और नकली असली है। Truth is untruth, untruth is truth. सत्य असत्य है और असत्य सत्य। That's the complexity of this world. तो ये है इस जगत की जटिलता। So how will you come to an absolute conclusion? तो कैसे आप अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे? How will you know what is real or unreal, what is true, what is untrue? कैसे आप समझ पाएंगे क्या असली है, क्या नकली, क्या सच है, क्या सत्य? How would you answer that question? इस सवाल का उत्तर आप कैसे देंगे? When Krishna talked to me, Hmm? I know this is true. When Krishna talks to me, I know this is truth. But it's not true. So is Krishna talking to you? तो जब कृष्ण मुझे बताएंगे कि ये सत्य है तो वो सत्य होगा। तो महाराज पूछ रहे हैं कि आप कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं? Very controversial. Is Krishna telling you to hear what I'm telling you, or is he telling you not to hear what I'm telling you? क्या कृष्ण आपको बता रहे हैं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको उसको सुनना चाहिए, या वो बता रहे हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको नहीं सुनना चाहिए? क्या What is बता- Krishna telling you? कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं? Do you know? क्या आपको पता है? Listen to you. Hmm? He says, Krishna's telling to listen to you. Sure what? Krishna, he's telling she should listen to you. Okay. तो वो कह रहे हैं कृष्ण मुझे बता रहे हैं, Krishna will say who we should listen to, who we should not listen to. कह रहे हैं, कृष्ण मुझे बता रहे हैं आपको मुझे सुनना चाहिए। तो That's why I'm emphasizing this point. We have to fully depend on Krishna. इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, हमें पूरी तरह कृष्ण के ऊपर निर्भर होना होगा। Because ultimately only Krishna will give us the necessary intelligence and faith to understand what will help us to come to Him and what will be an obstacle or impediment from being able to come and surrender to Krishna. So only Krishna ultimately can decide that. तो केवल कृष्ण हमें ये बुद्धि और श्रद्धा दे सकते हैं कि कैसे हम उनके तक पहुंच सकते हैं या क्या चीजें हमें बाधा दे रही है उनको पूर्ण रूप से शरणागत कर पाने के लिए।
Any other question? कोई अन्य प्रश्न? The lights didn't go off yet. बत्ती अभी तक बुझी नहीं है। Yeah. Anything that I think on my bodily platform, is it asatsanga? Anything what? Anything that I think of the body or sentiment or the emotion, is it asatsanga? If all of what you're depending on is asat, then that's asatsanga. So the mind is completely asat. The mind is completely asat. Huh? Yeah. तो प्रभु सवाल पूछ रहे Make you हैं sound good, man. You know what I mean? तो ये पूछ रहे हैं कि जो भी मैं अपने शरीर के प्रति शरीर के प्रति You guys will think I'm a poet, man. You know? शरीर और शरीर के संबंधों के प्रति आसक्त हो, भावना हो, तो ये सब क्या असत्संग है? तो गुरुदेव बता रहे हैं अगर आप इन सारे भौतिक चीजों के ऊपर निर्भर हैं जो कि असत है, तो मतलब ये असत्संग ही है। I don't look like a poet. तो मैं कवि की तरह नहीं लगता। Maybe he can make me sound like a poet. लेकिन हो सकता है मुझे ये सुनने में कवि की तरह लगा है। So it says that, you know, it's either Krishna controlling our intelligence, mind and senses, or Maya controlling our intelligence, mind and तो senses. कहते हैं या तो कृष्ण हमारे मन बुद्धि इंद्रिय को नियंत्रित करेंगे या माया हमारे मन बुद्धि इंद्रिय को नियंत्रित करेगी। So if you surrender to Krishna really, then Krishna will purify and control. Rishikesh, right? Master of mind and senses will purify and control mind, intelligence and senses. तो अगर आप कृष्ण को शरणागत करेंगे तो ऋषिकेश आपके मन बुद्धि इंद्रिय को शुद्ध करेंगे और उसको नियंत्रित करेंगे। If we don't surrender seriously to Krishna, then we're surrendering to Maya. तो अगर हम गंभीरता से कृष्ण को शरणागत नहीं कर रहे तो हम माया को And then शरणागत Maya will capture your intelligence, your mind, your feelings, your emotions, your senses. तो माया आपके मन, आपकी बुद्धि, आपके इंद्रिय, आपकी भावना, आपके अनुभवों को नियंत्रित करेगी। So without surrender, genuine surrender to Krishna, then automatically that means Maya is contaminating, controlling mind, intelligence and senses. तो अगर सही तरीके से कृष्ण को शरणागत नहीं करेंगे तो अपने आप ही सारा नियंत्रण मन बुद्धि इंद्रिय का माया के हाथ में होगा। So that's asat, asat. तो ये असत्संग। So if we do not submissively hear from Krishna, Krishna Parampara, Guru Sadhu and Shastra, everything but that is asatsanga. तो अगर हम विनीत भाव से कृष्ण कृष्ण परंपरा गुरु साधु शास्त्र श्रवण नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ इसके अलावा केवल असत्संग है। That's why it says Nityam Bhagavata Sevaya. इसलिए हम कहते हैं नित्यम भागवत As सेवा। much as possible hear about the Krishna, Krishna-katha, Hari-katha. जितना ज्यादा हो सके हरि कथा कृष्ण कथा के बारे में श्रवण So करें। in those moments you're hearing Krishna, Krishna Parampara, Guru Sadhu Shastra, right? So then that way you're aligned with absolute truth. Everything but that topic and those descriptions, all the rest of it is more or less Maya, grossly or subtly. तो जब भी आप इसके लाइन में हैं कृष्ण कृष्ण परंपरा गुरु साधु शास्त्र सुन रहे हैं, इसके अलावा जो कुछ भी अन्य विवरण दिया जा रहा है ये सब असल में माया है। So you start getting into emotions and feelings, and I was thinking and feeling, you know, then it's materialistic platform. जैसे आप कहने लगते हैं मैं कुछ भावना अनुभव कर रहा था, मैं कुछ सोच रहा था, विचार कर रहा था, ये सब भावनाएं ये सब। Then you'll not be peaceful, you'll not be happy, you'll not be simple-hearted in your consciousness. तो आप शांत नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे, आपके हृदय अपनी चेतना में आप सरल नहीं होंगे। You'll be contaminated, disturbed, आप दूषित होंगे, confused, परेशान होंगे, भ्रमित रहेंगे, uncomfortable, असुविधाजनक not स्थिति में satisfied. संतुष्ट नहीं रहेंगे। That's asat, ये है sangha. असत संग। So you see by the results. तो आप परिणाम के आधार पे देख So if पाएंगे। the results are not nice, that means asat sangha platform. तो परिणाम अगर अच्छा नहीं है तो असत संग का स्तर। So if you're satisfied with your asat sangha platform and you want to call that satsanga platform, then you can do that. आप अपने असत संग स्तर से संतुष्ट हैं और आप उसको सत्संग कहना चाहते हैं तो ये आपका कार्य है। It's just not real. लेकिन ये असली नहीं है। It's just some kind of mental adjustment, ये बस किसी तरह के मानसिक अनुभव करने का प्रयास कर रहे some हैं kind of mental material concoction. कि भौतिक मानसिक बनावट like करने का that? प्रयास करें। क्या आपको पसंद आया ये? Anybody else? कोई अन्य? Did I speak long enough? क्या मैंने लंबी बात कर ली? नहीं। Some say yes, some say no. कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं। Some are more eager than others. कुछ लोग ज्यादा उत्सुक हैं, कुछ अन्य लोगों से। That's understandable. तो ये समझा। Right? You go to the class, not all the students are exactly the same. तो आप क्लास में जाते हैं, सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं।
Mostly I was not interested in so many subjects, ज़्यादातर जो है मुझे विषयों में दिलचस्पी नहीं रहती थी, but this subject matter was very interesting to me. लेकिन ये विषय मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। I wanted to fully understand it. मैं पूरे तरीके से इसको समझना चाहता था, So I never rested. तो मैंने कभी आराम किया ही नहीं। Soon as a question, doubt, reconciliation, that means I have to go deeper. I have to explore and find what is the answer. What is that answer? जब भी कोई प्रश्न या कोई संदेह आता था, मैं और ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास करता था, इसका उत्तर क्या है? Like deep sea diver, you know. जैसे जो अंदर गहराई में गोता लगाते हैं समुद्र में। But if you're happy just floating up on the top of the water, no problem. लेकिन अगर आप सतह पर तैर कर खुश हैं, तो कोई समस्या नहीं है। Put one of these thing on with the tube, right? You want to see up there from a distance, you know, no problem. एक छोटा ट्यूब लगा के सतह पे आप तैरें, कोई समस्या नहीं है। Otherwise, you got to get the tanks and you got to go deeper, you know. वरना आप टैंक लेकर आ सकते हैं और उसके बाद आप गहराई में जाके गोता लगा सकते हैं। Are you ready for the tanks, or you're just floating up on the top, just kind of looking from the distance? तो आप टैंक से जाना चाहते हैं या फिर वो ट्यूब लेकर के वो सतह पे रहकर देखना चाहते हैं? Are you ready to take a risk? क्या आप ये खतरा लेना चाहते हैं? If you depend on Krishna, you can take any risk. अगर आप कृष्ण के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, तो आप कोई भी खतरा उठा सकते हैं। I remember the first time I heard that God is a blue cowherd boy who plays on a flute. जब मैंने पहली बार सुना भगवान एक नीला रंग का ग्वाला है जो बांसुरी बजाता है, And my mind was like, come on, you know, how is this possible? मुझे लगा क्या बात कर रहे हैं? Right? I just thinking like some old guy up in heaven, you know, like this Christian kind of perspective, right? तो हमारा ईसाई दृष्टिकोण था कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति होगा जो इस तरह का भगवान का रूप हो। Like a youthful young boy, blue skin, playing on the flute, and a bunch of cows. I said, this is the absolute truth. कोई जवान नीला रंग का लड़का जो बांसुरी बजाता हो, गायों के साथ खेल रहा हो, ये परम सत्य है। So how are you going to accept that? अब कैसे उसको हम स्वीकार कर पाते हैं? Right? So if 95% of everything else was exactly spot on, तो उसमें से 95% बिल्कुल वही बात कह रही हो। so now I just have to go the last 5%. आखिरी जब 5% Am I getting thrown out of the club here or what? Huh? Drink up. You know, when the party's over, they start shutting off the light. Right? पार्टी खत्म होने वाली होती है तो सारी बत्तियां लोग बुझाना शुरू कर देते हैं। They start turning it on and off, you know. वो उसको बंद करना शुरू करना चालू करना शुरू करते हैं। I shouldn't talk about all of that. ये सब चीजों के बारे में मुझे बात I नहीं don't करनी want to चाहिए। think about my past. मैं अपने अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहता। That means you're waiting too late to go home, you know what I mean? यानी कि आप जरूरत से ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए। But I remember Srila Govinda Swami, he would give these classes and he would talk for hours and hours and hours, and we were like loving it, but the people were like, you know, some of the organizers were like going mad, you know. तो हम जो श्री गोविंद साहब से सुनते थे, तो वो घंटे बातें कर रहे थे और बहुत सारे व्यवस्थापक जो उनका दिमाग फट रहा होता। I remember one time they invited Gurudev to speak, and it was Ramayana, right? So Gurudev talking about Lord Ram. And Gurudev, when he talked about Lord Ram, he would go on, he would tell the whole Ramayana, you know. मुझे याद है जब गुरुदेव का रामायण सुना रहे थे और जब गुरुदेव रामायण के बारे में बात करना शुरू करते थे तो पूरा रामायण सुना He was so ecstatic and so like, you know, excited, you know. वो इतना भाव में इतने उत्साह में आ जाते थे रामायण सुनाते हुए। And then Gurudev is supposed to be like one of the many speakers there, right? और गुरुदेव जो है वहाँ अनेक प्रवक्ता में वो एक प्रवक्ता थे। And the Gurudev going for like hours, you know. गुरुदेव जो है And all the organizers are like, और सारे व्यवस्थापक का जो है दिमाग Gurudev just keeps going, you know. गुरुदेव जो है And they're like literally ready to crash the stage, you know. स्टेज में चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। Like it was like we're like holding all the organizers back, you know? सारे व्यवस्थापक वहाँ पकड़ के रखते थे ताकि While Gurudev speaking, so it's almost and then it got to the point like they're ready to crash through. जब इतना समय आता था कि सब लोग स्टेज पे And चढ़ then Gurudev is like, oh, glory to Srila Prabhupada. Yeah, let's go, you know. गए। Until like the last
possible second. सबसे आखिरी सेकंड तक हम चलते रहने देते It was like a complete revolution was ready to go on there. हमारे साथ मतलब क्रांति शुरू कर देंगे हम, आंदोलन शुरू कर देंगे हम। And the Gurudev just said, okay, let's go. ठीक है हम चलते And then we had this whole entourage of like hundreds of devotees walking with Gurudev through the crowd, right? So this is another 1 hour to get to the car, और फिर बहुत सैकड़ों भक्त गुरुदेव के आसपास रहते थे, उनको जब तक वो जाते ना जाए तब तक उनको घेरे रहते थे और 1 घंटा उधर And जाने some में other guys trying to talk after Gurudev, and we're just this entourage just plowing through the middle of the कोई और भक्त जो है स्टेज पे जाकर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, सारे भक्त जो है हमारे गुरुदेव के पीछे पीछे जा रहे हैं। It's like, complete disturbance, पूरी तरह से लोग परेशान हो जाते हैं। It was unbelievable. ये अविश्वसनीय था। That was fun. बहुत मजेदार था। Those were the good old days. बहुत अच्छे पुराने दिन थे। Any last thing? कोई आखिरी चीज? Well, the lights are still on. We're down to 1 light. एक बत्ती पे भी हम Oh my God. All right, everyone. I hope that's helpful to you. तो मुझे उम्मीद है सभी को Pray to Krishna. कृष्णा से प्रार्थना कीजिए। I remember when I first went to Bhubaneswar, and many times Gurudev say something, I was like, I never heard that before. मुझे याद है जब मैं भुवनेश्वर गया पहली बार तो कई बार It's very revolutionary. ये चीजें मैंने पहले सुनी नहीं, ये बहुत आंदोलनकारी बात है। And then Gurudev is being banned from all of these countries and all of these temples. और गुरुदेव को अलग-अलग देशों से अलग-अलग मंदिरों से बैन किया जा रहा था। They want to excommunicate him. और उनको जो है बहिष्कार करने वाले थे। So to follow someone who's being banned and excommunicated, it is not easy. और किसी ऐसे व्यक्ति को पालन करना जिनके ऊपर प्रतिबंध डाला गया है। The easy way would just find some place within the institution and just try to just survive. किसी तरीके से हम संस्था में कुछ स्थान पाके जीवित रहने का प्रयास कर रहे थे। But what is the value of that situation if there's no Hari-katha Krishna-katha? लेकिन ऐसी परिस्थिति का क्या लाभ जहाँ कोई हरि कथा कृष्ण कथा नहीं हो? Then it's just dry, philosophy just to take advantage of the facility of a religious institution. तो बस सूखा सिद्धांत पे बातचीत किया जा रहा है ताकि संस्था की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। So, there's nothing spiritual about तो that. उसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। So if you're happy with, religiosity instead of spirituality, then do whatever you have to do. तो अगर आप धर्म से संतुष्ट हैं और आध्यात्म को त्याग कर रहे हैं तो आपको जो भी करना है वो करिए। But it's not spiritual. लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होगा। And I know the difference. मुझे दोनों के बीच का अंतर पता है। And you can accept that or not accept that. आप उसको स्वीकार कीजिए Only या स्वीकार Krishna मत will कीजिए। will tell you whether I'm speaking the truth to you or not. केवल कृष्ण आपको बताएंगे कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या नहीं। I prayed to Krishna Prabhupada and I got bona fide Guru and Parampara. मैंने कृष्ण प्रभुपाद से प्रार्थना की और मुझे प्रमाणित गुरु मिले परंपरा में। And I was accepted in that Parampara. मुझे उस परंपरा के द्वारा And स्वीकार किया गया initiated in that Parampara. और उस परंपरा में मुझे दीक्षा दी गई। By mercy of Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण की कृपा से। I was trained in that Parampara. मुझे उस परंपरा में प्रशिक्षण मिला। For years. सालों। And I was instructed in that Parampara. और मुझे उस परंपरा में निर्देश To do what I'm doing. जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए। So I don't know what else you need to know. My Gurudev will be the judge of me, isn't it? मुझे नहीं पता आप लोगों को और क्या जानने की जरूरत है। मेरे गुरुदेव उसका निर्णय करेंगे। But if you want to just sit from externally with three-dimensional senses and speculate and try to understand, you could make a serious miscalculation also. लेकिन अगर आप बैठकर अपने मनोधर्म से अपने 3 आयाम वाले उपकरणों से मापने आंकने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत ही गंभीर गलती करेंगे। And then if you get a very good effect and benefit in your spiritual life, how is that happening if Krishna and Krishna Parampara is not involved in our discussions? अगर आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव और लाभ दिख रहा है इस हमारी चर्चा के माध्यम से तो कैसे कृष्ण परंपरा इस चर्चा में मौजूद नहीं है? There would just be blank fire. क्या ये कोई खाली बंदूक है? There would be no potency, there would be no revelation, there would be no expansion of your consciousness and understanding. None of that would be manifesting. कोई शक्ति नहीं दिखाई देगी, आपकी चेतना उन्नत होती हुई नहीं दिखाई देगी, ये सब कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। So somehow or other, by mercy of Guru Krishna, it's working. तो किसी तरह से गुरु और कृष्ण की कृपा से ये कार्य कर रहा है। And if you think,
somebody else can help you better, then go, no problem. अगर आपको ऐसा लगता है कोई और आपकी बेहतर मदद कर सकता है तो I'm not forcing anybody to stay to listen to me. मैं यहाँ किसी को मजबूर करके सुनने के लिए बात नहीं I don't करता। have to. मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। Nobody forcing. There's so many gurus are there. Go find another guru. You don't have to accept me. आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा। बहुत सारे गुरु यहाँ मौजूद हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। Yeah, go to Pune. There's many varieties. पुणे में जाइए, बहुत सारे आपको विभिन्नताएं हैं। 1.5. 1.5 varieties. 1.5 वहाँ पे विभिन्नताएं हैं। 1.5. 1.5 Maybe your odds are better. 1.5 odds is maybe that's better for you. हो सकता है ये अलग संख्या ही आपको अच्छा लगेगा। Then you can be a bridge preaching psychologist doing pranayama. आप एक ब्रिज प्रीचिंग मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं जो प्राणायाम कर रहा हो। And worshiping the demigods. और देवताओं की पूजा करेगा। So if you're into that kind of thing, तो आप अगर ऐसी चीजें करना चाहते हैं, then maybe you need another guru. तो फिर आपको कोई दूसरे गुरु की जरूरत है। Hatha yoga, doing pranayam, on the bridge preaching program, worshiping the demigods. और देवताओं की पूजा करना। You can join that parampara. उस परंपरा में हम जुड़ सकते हैं। That's available. ये भी उपलब्ध है। It's all available. ये सब उपलब्ध है। So what do we really want? तो हम क्या चाहते हैं असल में? And then based on that, Krishna will either give a mercy or vanchana. और उसके आधार पे या तो कृष्ण हमें कृपा देंगे या वांछना Either देंगे। he'll give you good intelligence to understand it, or you'll get cheated. या वो हमें अच्छी बुद्धि देंगे इसको समझ पाने के लिए, या हमें And नहीं everybody चाहिए। has to pass the test. और सभी को ये परीक्षा पास करनी है। I accepted other gurus before. मैंने पहले बहुत सारे गुरुओं को I स्वीकार got किया cheated. और मैं ठगा गया। And when I was sick of being cheated, then I prayed to Prabhupada and Krishna, and I got bona fide guru. और जब मैं बहुत ज्यादा थक गया इस तरह ठगे जाकर, तो मैंने प्रभुपाद और कृष्ण से प्रार्थना की प्रमाणिक गुरु के लिए। That was my experience. ये मेरा अनुभव था। Because I didn't understand Guru Tattva before. क्योंकि मैं गुरु तत्व पहले कभी समझा नहीं था। Nobody taught me, nobody explained it to me. किसी ने मुझे सिखाया नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं। All right, everyone, we better go before the last light goes off. बेहतर होगा आखिरी बत्ती बुझने से पहले हम सब चले जाएं। Then we may all get locked in here, you know. वरना हम सब यहाँ फंस जाएंगे। They may call the police. पुलिस को बुला दें। The ISKCON mind police may come. इस्कॉन की माइंड पुलिस हो सकता है यहाँ आ जाएंगे। Yeah, they have an ISKCON mind police. इस्कॉन का एक माइंड पुलिस है। When you start like too much broadening your intelligence and consciousness, some flashing lights go on over in their office over there. जब अपने बुद्धि और चेतना को और ज्यादा विस्तार करने लगेंगे, तो वहाँ उनके जो है कुछ लाइट जलने लगते हैं उनके ऑफिस में। Someone's trying to break out of the matrix. You know? कोई हमारे जाल से निकलने का प्रयास कर रहा है। Send some lieutenants over there. You know? वहाँ कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा। We got some free thinkers going on over there. कुछ खुले विचार वाले लोग आ चुके हैं। They're trying to become Mahatmas. और वो जो है महात्मा बनने का प्रयास कर रहे हैं। Guy scares me. Man. ये आदमी मुझे डराता है। It's not exactly like a monkey like picking off. It's like an elephant, you know. कोई पकड़ने नहीं जैसे उठा रहा है, लगता है कोई हाथी आगे कुछ Chunk, you know? जैसे हाथी अपने सूंड से मार रहा हो। It doesn't work so good like picking off like mosquitoes. You know? ऐसा नहीं कि जैसे कोई मच्छर उठा रहा Wiping the people out, you know. है, लग रहा है लोगों को उड़ा रहा है सूंड से। I mean, birds are getting killed. मारे जा रहे Many things are being damaged in the process. You know? बहुत सारा क्षति हो रहा है It's इसमें। not so subtle, you know. इतना सूक्ष्म तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। All right, everyone, thank you very much. धन्यवाद सभी का Shri बहुत Shri बहुत। Gauranitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gauranitai ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gaur Premanand. Hari Hari Bol, Hare Krishna. We spoke shloka tonight. आज की रात हमने श्लोका Now you accept it because I spoke shloka.
Do you have any cookies? Yeah. Let me hand out some cookies before the lights go out. If I give you a cookie, it does not mean you have to be my disciple. Alright? It's just prashad. Okay? That's all it is. Nothing, no poison, there's no hidden tantric, mantric, mantras, just offer to Krishna, one Krishna, ordinary cookies. I didn't talk too long, did I? मैंने ज़्यादा लंबी बात नहीं की ना, A little bit? थोड़ी लंबी। Here's another one. I don't want to disappoint Sean. शाम का प्रयास नहीं करेंगे। He might lose faith in me. मेरे प्रति विश्वास उठ जाएगा। If I only give him one cookie instead of two, he could see that as a sign. If he gives me only one cookie, that means he's not my guru. That's how we're coming to understand whether he is my guru or not. Dave, am I supposed to be handing out two at a time? Am I breaking any etiquette or anything like that? They seem like a little small, so I don't want to cheat the public, you know? Yeah, two is one. Huh? Two is the same as one. They're like cat. Another philosopher. Two is the same as one, you know? Did you get a cookie? Yeah. Are you happy yet? Better bit. Maharaj is very, very bad. He wants everyone to be happy. It's really disturbing, you know? What right does he have to make people happy? It seems awful controlling. Huh? Is he making me sound like a poet again? Sometimes I joke when I ask the translator, I said, please make me sound better than I really am, you know? Did you get? Yes. Good. Everybody got? Deva? Two is like three. Two is the new three. Science doesn't matter, you know, it's like you make it whatever you want. Two is the new three. Suffering is the new happiness. Pranayama is the new bhakti. A lot of butter in that. That's dangerous. You ready? Did you get it? Yeah? Want some more? You're a young guy, you might want some more cookie, you know? Mataji, you want? Another big kid. 15 minutes. His voice is getting deeper though, do you notice that? Boy, he's not near his mom. Yeah. Mommy. मम्मी की जैसे आवाजें I'm stealing my cookies. I said, okay, I'm gonna go have a cookie, you know, they're like gone, you know. So what happened to the cookies, you know? He said, oh, that was from yesterday. We have a competition, you know. One night I came out in the middle of the night, he had like a flashlight. He was in the refrigerator with a flashlight.
I have an alarm in my room. And just no problem. कोई समस्या नहीं है. So that Prabhupada talking to brand new person. Okay, he's so attached to playing the guitar. If I said don't play the guitar, he's gonna leave. Okay, play, guitar, but chant Hare Krishna, because gradually Krishna may purify him from the strength of that attachment. कि जो गिटार की आसक्ति को त्याग नहीं कर सकते, प्रभुपाद कहेंगे गिटार मत बजाइए, तो वो छोड़ कर चले जाएंगे. उन्होंने कहा हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए, गिटार बजाइए, धीरे-धीरे आप हो सकता है शुद्ध हो जाएंगे भगवान के. So you don't use an instruction, from a brand new one-day person joining the movement, and then forever, whatever you want to do, just do it for Krishna. ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए आदमी हैं, तो गिटार को छोड़ नहीं सकते, उसको Doesn't matter what it is. Krishna will accept it. जो भी आप करें कृष्णा सब स्वीकार करेंगे. Thank you, everybody. धन्यवाद सभी का. Do I have any lights in here? Jila Gurudev ki jai. Thank you.